So basically, today we are going to discuss history questions. Okay, in GS paper 1, we are going to discuss the questions of history. We are going to have a detailed analysis uh, of history questions, and we'll also discuss that what should be strategy accordingly, right? What are the sources that we need to study looking at this pattern? Okay, so I think that all of you must have seen the papers already. So here I have just compiled the questions, all those questions that were from the history segment. Okay, so let's have a look at the question first. The total number of questions that were asked. Okay, these are first, second, third, fourth, five, and six. So the total number of questions that are asked here is 6 questions. Clear? That is one important thing. Now, here, how many questions have been asked from art, ancient, medieval, and culture? AMC. So the number of question here is, this is the question from AMC. Okay, basically now it has become ANC, art and culture, because you can see mainly focusing on the art and culture part. Okay, Vipin, my voice is clear? Is there any disruption? Okay, so basically it has become art and culture, and I will discuss that what is the relative difference between ANC and art and culture. Okay, that we need to study in today's class. And again, this is the question from art and culture, right? And this is the question, that is question number 11. It is again from art and culture segment. So total number of questions from art and culture theme is three questions. Okay. Now look at the modern Indian history, right? So in modern Indian history, this question, Quit India movement, related to modern Indian history. Plus, there is another question. This one, question number 13. How far was the industrial revolution in England responsible for the decline of handicraft and cottage industries in India? So this is also from modern Indian history. This is also from modern Indian history. It means that modern Indian history, the number of question is 2. Now, one question has been asked from the world history, and that is uh, this one. How far was it correct to say that the First World War fought essentially for the preservation of balance of power? So this is from modern world history. This is the syllabus part, modern world history. So number of question is 1. Now again, from art and culture segment, okay, 2 questions are 10 marker, and one question is 15 marker. So this we need to understand, that 10 plus 10 plus 15 marker. It means total is 35 marks from art and culture. Now modern Indian history, there are 2 questions again. One is 10 marker, okay, and the second is 15 marker. It means 10 plus 15, that is 25 marks here. Here we see the total number of marks is 25 marks. 25 marks. And world history question is 15 marker. 15 marker. Okay. Now look at the distribution of words. Generally, 10 marker question you have to write in 150 word, and 15 marker question you have to write in 250 words. So when we look at the word limit, there are 2 formats. One is 150 word, and the second is 250 word format. Some things are very clear in your mind. Now first look at the nature of the questions. Okay, then I will discuss the answer also. I will also discuss the sources. Okay, and I will also discuss the future strategy accordingly. Now here look at the question. The first question is, underline the changes in the field of economy and society, okay, from Rig Vedic to later Vedic period. It means the question is based on what? Okay, a comparative study. It's not static question. For example, if I ask a question that discuss the nature of society, okay, in the Rig Vedic period, this is a straightforward question, and it includes only one theme. Here, how many theme has been included? 2 themes have been included. And while writing the answer, how many dimensions have been asked to explore? 2. One is society, and the second is economy. And not only you have to explore these 2 dimensions, but you will also have to trace out the development. कि क्या development हुआ from Rig Vedic period to later Vedic period. And this requires what? Understanding. Okay, because this theme is itself a very broad thing,
But when you are going to write, if you have a good understanding, you can write it easily in the 150 words. That is the main challenge here. Now the second question is what? From the Pallavas topic, Pallavas of Kanchi, and here you have to write about art and literature. You have to explore two areas. Now the third question again based on your understanding, that Quit India movement, what are the events that led to Quit India movement? It means you must have a good understanding of what are the main factors or reasons responsible for the outbreak of Quit India movement plus the immediate reason why Quit India movement took place, right? So both the concepts must be clear here. Now the fourth question is about Cholas. That is a very important topic that I have emphasized in my classes again and again. Okay, and here you have to write about art and architecture, the cultural contributions of Cholas. Now the next question is, how far is it correct to say that First World War was fought essentially for the preservation of balance of power? The question is not asking that what are the reasons responsible for First World War. It is asking that do you think that balance of power was one of the main reasons? Now, if you want to answer this question, you must have a holistic understanding from Napoleon's era till First World War. That how balance of power frequently changed, right? And which conflicts took place in Europe as a result of this. So again, it is what an understanding based question. If you have a good understanding, you can easily write it in 250 words. You can write it in 150 words also if you understand the theme well. Now the next question is, how far was the industrial revolution in England responsible for the decline of handicraft industries? Recently, I have also uploaded a video on YouTube channel, and there I have discussed three perspectives: colonial, Marxist, and nationalist. मैंने बताया था nationalist and Marxist share many of the views, and this is one of the most important study of the Marxist historians. Industrial revolution, what Marx said that industrial revolution in Britain was becoming successful, right? And India was bleeding. This is a statement of Karl Marx. Okay, so many of these questions requires a good understanding of the theme. Total number of questions that you see here is 35 plus 25 plus 15. 35 plus 25 plus 15. Okay, it is कितना हो गया 85 ना? Okay, 75. Okay, 75. 35 plus ये कितना है 25, ठीक है. 75 number questions, right? Total these are the questions here. Now what we see is that this is direct 75 marks plus when you study world history. Okay, I have already discussed with you in the essay module that the essay doubter is a man of science is what Renaissance man concept. So if you know about this topic Renaissance, you can easily write a lot. Then you will also utilize the concept of social religious reforms. You will also utilize the concepts that you study in the Bhakti Sufi movement. You will also use and utilize the concepts that you read in the ancient Indian history in the form of Buddhism and Jainism. तो बहुत सारी चीजों को वहाँ relate कर सकते हो ना. So history has, okay, you can say that if you understand the history well, you can write good essay. Basically, when you start the essay, okay, so you can write good historical perspective in that essay. In each and every essay, there is a dimension of history so that you can explore, right? So here, this module helps us very much. Plus here, it also gives us, okay, some idea that which topic can be important in 2025 prelims. That I will discuss in detail, but let's discuss the answer of these questions first. Then I will discuss the strategy also. So starting with the very first question, what is the question? Underline the changes in the field of economy and society from Rig Vedic to later Vedic, okay, period. I have already discussed this question in my classes, okay. तो आप में से कोई AMC की क्लास में था? Any one of you? Okay, okay. Have you attended AMC classes? Have I discussed this theme in detail? एक एक dimensions मैंने explore किया, but here we cannot write in that much detail. Here we have to follow what? A sketch and diagrams to write the answer that we can easily write. Now suppose this question is asking you to write that underline the changes in the field of economy and society from Rig Vedic to later Vedic period. So you are going to follow which model? We all know intro, then there will be main body, and then there will be conclusion, like I have already discussed with you in the classes. And what I have told you that when you are writing introduction, the introduction must be simple.
right? 15 word, 20 word, 30 word, यहाँ तक जा सकते हैं, because sometimes the need of the question is such like that introduction में ज़्यादा word लग जाते हैं, right? But if it's not needed, you must try to write the introduction as simple as you can. Okay. Conclusion also. Introduction and conclusion is for what purpose? I have already told you that these two, okay, parts, introduction and conclusion, supports the main body of your answer. So they're in supportive role. Okay. And when you write a good introduction, a good conclusion, then your answer become, okay, a well structured answer. Well structured answer. This is the benefit of writing introduction and conclusion. Without writing introduction, without writing conclusion, the answer will be, you can say that, incomplete. वो incomplete रहेगा, and that's why we need to write the, okay, introduction and the conclusion, right? Now, the second part that I have already discussed with you in the classes, that when you are writing main body, okay, try to write your answer in bullet format. Okay, this will make your task easier. The same format will be helpful in all the answers. Whatever has been asked, we are going to use the same format. So first we'll write a simple introduction. So write the introduction of this question. Write the introduction. Okay, a simple introduction. देखो, there can be multiple introductions of this question. For example, this question is talking about Vedic period. This question is talking about two phases of the Vedic period, early Vedic period and later Vedic period. It means this question is dealing with a transitional phase. Why it is a transitional phase? Because, देखो, why it is a transitional phase? The answer is very clear. Because Indus Valley civilization period was the phase of first urbanization. So when you write the answer, na, you have to convey someone something. मेरी बात समझ गया ना? वही वाला आर्ट यूज करना है जो कॉलेज में आपने यूज किया था. You have to convey someone something. यहाँ पे who is that someone and what you are conveying, this is important. ठीक है? So many students will write that Vedic period starts from 1500 and 600 like this, but you will give a message that I know about the interconnectivity and the linkages of this topic. क्योंकि आप यही तो चेक करना चाहते हो कि are you familiar with the comparative development? So you will do what? You all know that first urbanization was IVC and second urbanization phase is what? Mahajanpad period. This is second urbanization phase. अब आप बताओ कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन और सेकेंड अर्बनाइजेशन दोनों के बीच का जो फेज है, इज इट अ ट्रांजिशनल फेज? यस. फर्स्ट अर्बनाइजेशन के बाद डिक्लाइन हो रहा है एंड देन अगेन you are preparing for the second urbanization. So obviously it is what? A transitional phase. Clear? So can we write here that, write this, that Vedic period, introduction में कैसे लिखेंगे? देखो, like this, Vedic period, and then you will write in bracket, what is the time period of Vedic period? Within 1500 BC to 600 BC. यही है ना? So write this, Vedic period, okay, was or is, Vedic period was a transition phase between period of two urbanizations. Vedic period was a transitional phase. Vedic period was a transitional phase between period of two urbanizations. Period of two urbanizations. It was a transitional phase between period of two urbanizations. एग्जामिनर इतना पढ़ा लिखा होता है, वो समझ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू अर्बनाइजेशंस. ठीक है ना? सो इट वाज अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द पीरियड ऑफ टू अर्बनाइजेशंस, कॉमा, राइट, वेयर सिग्निफिकेंट चेंजेस वेर सीन, वेयर significant changes were seen, where significant changes were seen in the fields of economy and society, were seen in the fields of, the question is asking about what? Economy and society. So we will mention here what? In the fields of economy and society. In the fields of economy and society. कितना अच्छा. Now count the number of words here. Now you have already written that it is a transitional phase. तो transitional phase है, तो वहां पे क्या होगा? There will be stages of development.
there will be comparative stages of development here. So now what is the number of words here? We can count it. Okay, 25. Okay, so what we have to do, we have to maintain a structure like this. In intro we will write about 20, 25, maximum 30. Okay, then in conclusion you will write 15, 20 or 25, not more than this. Okay, maximum. Now remaining words, if I say that about 110 to 120 words we have to use in the main body. Clear? ये proportion थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है. If you are writing a short introduction here, तो ये क्या हो जाएगा 15. So here main body में आपके पास ज़्यादा scope होगा लिखने के लिए. Got it? So this is the introduction. Now in main body what you will write? Okay, so in the main body of the question, write main body. Main body. In exam you will not write main body. You will change the paragraph, and examiner will understand that what you want to say. Main body you have to deal with how many things too. So if you are going to use 120 words, so always take care of two things. That main body you will divide it into two parts, part 1 and part 2. Clear? ये सब लिखना नहीं है. This should be in your mind. In part 1, suppose we are writing about society, and in part 2 we are writing about economy. So we can consume how much words here? 60, not more than this. So can we write in the comprehension format? Never. If you will start writing like story, this is never possible to write. Okay, this is the practical idea. Here we will have to do what? यहाँ पे हमको use करना पड़ेगा अपना तरीका, right? Our method. And what is that? So in main body. Suppose we choose to write about society. So but what is the best way to write the answer? You will write here society, and then you will make two divisions here. Here you will write Rig Vedic period, and here you will write later Vedic period. Got it? Here you will mention what? 1500 BC to 1000 BC. Is it the time period? Bata na class में. And this is what? 1000 BC to 600 BC. 1000 BC to 600 BC. You are writing about society. Clear? So we can write full sentences or give some indications or hints only. अब आप बताओ what is practical? Now you will use the method format like this. Got it? You will use the format like this in your copy, and you will give some indicative hints only, because you are not in a condition to write full sentences. आप full sentences लिखने की condition में नहीं हो. Are you in the position to write full sentences? No. Clear? Now tell me here. Okay, the society was largely egalitarian. So you will write two words only. Largely egalitarian. The society was largely egalitarian. We are not writing full sentences. We are avoiding to write. Otherwise, we will not be able to write. Acha, if we are talking about society, so the most fundamental aspect of society was what? Four Varna system. Rigveda, Purushuk, four Varna system. It is talked upon. So we will mention that. But उसमें भी पूरा डिटेल में नहीं जाना है. सारी बात पता होने के बावजूद भी you will write here what? Four Varna system, and in bracket you will write profession based system. Four Varna system, but here this system is what? Profession based system. Can we write this? This is the indication or hint. We don't have to write the full detail कि कहाँ पे ये four Varna system मिलता है और क्या होता है. There is no need to write. Got it? Okay. Now tell me one thing. This is egalitarian society. It means this four Varna system is profession based. This is proved. Now tell me one thing. The society was patriarchal or not? Patriarchal elements were there, क्योंकि घर का मालिक गृहपति होता, right? But the women enjoyed lot of freedom. Got it? They could choose their husbands. They were the parts of political assemblies. This is also one of the most important aspects. So if we are talking about what? Society, right? So here some dominant features which are not present, we can also write it in the feature. जैसे एक देखो क्या है, क्या यहाँ पे rigid caste distinctions है, present or absent? Absent. So this you will write. What is not present, if it is an important feature, you will write. So you can write here that rigid discrimination. अच्छा, rigid discrimination. अच्छा, इसको रहने दो. Okay.
egalitarian likha na. Okay, write one point here that, okay, right, women enjoyed, okay, freedom here. Women enjoyed freedom here. Women enjoyed freedom. Women enjoyed more freedom. ऐसे लिख सकते हो, women enjoyed more freedom. Women enjoyed more freedom. This is one of the most important things. Women enjoyed more freedom. ठीक है ना? Now, one important point here. Okay, read this. In society, right? Aryavarn and Aryavarn, 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 and the second important term here is Dasavarn. ठीक है? Dasavarn. This was seen. Aryavarn and Dasavarn. ये चीज अपीयर होने लगी ऋग्वैदिक पीरियड में, राइट? Women enjoyed respectable position. अच्छा, here you have written women enjoyed freedom or respectable position. So in bracket you can write as scholars. Can you write some names here like Ghosha, Apala? So write some examples to substantiate your opinion. Ghosha, Apala, etc. एक दो अपने नाम भी लिख दी, right? अच्छा, here you have written women enjoyed freedom. Can you write one more point that uh, participated in political assemblies? Yes. Okay, so only some hints. There is no need to write complete sentences. So you can write here that participation in political assemblies. That is one of the most important aspect. Participation in political. You can say, right? Society. Read this. Social and religious evils were largely absent. Social and religious evils were largely absent. This is also an important part. Social and religious evils was largely absent. Can we say that the society was largely a kind of tribal society or pastoral society? Yes. Okay. So you can also include this point that the society was a tribal society or pastoral society. The society was a tribal society or pastoral society. We can include many more points, but is there the scope to write more? क्या लिखने का स्कोप है? अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल भी दे सकते हो, बट वी डोंट हैव मच स्कोप, सो वी विल हैव टू स्टॉप लुकिंग एट द अदर क्वेश्चंस आल्सो. तो एग्जाम में ऐसा होता है कि वन क्वेश्चन विच यू नो बेटर, सो दिस थॉट विल स्ट्राइक योर माइंड कि एग्जामिनर को सारा ज्ञान यही दिखा देता हूँ मैं, कितना जानता हूँ. तो दिस यू डोंट हैव टू डू, otherwise you will have to compromise with other questions. So one part we have dealt with. Okay, if you are not writing full sentences, here you are saving words. Is it clear, Biji? We are saving words here, and if we will save words, okay, we can give more inputs in the answer. That is the idea. Now what will happen in later Vedic period? What are the changes that you see? Just right here in simple words. Later Vedic period. Later Vedic period में क्या होता है? पहला सबसे important that read this egalitarian nature of society was disappearing gradually. हो गया? It was disappearing gradually. Egalitarian nature of society was disappearing gradually. This point we can write that it is gradually disappearing. Egalitarian nature of society disappearing gradually. Can we write? और जो सबसे important बात है वो क्या बतानी है? Four varna system. Now it has become what? Birth based, right? So that is the most important point. So read this. Four varna system have become birth based. Four varna system in bracket write only like this, that now birth based. Now four varna system is what? Birth based. अब four varna system क्या है? Birth based. Okay, you can write here in bracket that, okay, अच्छा देखो, if birth based four varna system, so what will happen? Okay, don't you think that restrictions will appear? For example, inter-varna marriages is not possible, plus there is a hierarchy in that varna system. Okay, so you can write here that restrictions, ठीक है, restrictions आ गया. Inter-varna marriages पर restrictions है, right? And varna system is now a hierarchical based system. It was now a hierarchy based system. It means Brahmins are at the top and Shudras are at the bottom. So now it has become a hierarchy based system.
एकदम मैथमेटिक्स की तरह लिखना. There is no need to write the full sentences. Now it is a hierarchy based system. Very important point. ये तो सबसे important है. This subordination of women started. Subordination of women started. That is the most important point. Subordination of women started. Subordination of women started. देखो, here what will happen? The women will be considered like, okay, an evil, like dice, like wine. ये क्या दिखलाता है? That subordination of women. No restrictions on marriages of women. ठीक है. पहले क्या था? They can choose their husband. Now some restrictions will appear. ठीक है. तो मैंने कहा ना कि two restrictions will appear altogether. Restrictions on the Shudras and restrictions on the women. So you can write here subordination of women started. Okay, if you want to write in a statement you can write here, but better you can leave here. ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा कि छोड़ दो उसको, because there is the problem of word limit. जैसे this statement was very good that now women were considered as a vice like wine and dice. छोटा सा statement है, we can write this. ठीक है ना? If you want to write, we can write this. Got it? That is one of the most important point. Okay? हाँ, write this. Okay? Hierarchical based system यहाँ जो लिखा है ना, टॉप पे आपने ब्राह्मण लिखा है ना, यहीं पे लिख सकते हो कि डोमिनेंस ऑफ प्रीस्टली क्लास स्टार्टेड. अलग अलग पार्ट मत बनाओ, जस्ट ड्रॉ सम स्ट्रक्चर्स. डोमिनेंस ऑफ प्रीस्टली क्लास स्टार्टेड हियर. Dominance of priestly class started here. Now tell me here the society is what? Urban society or rural society? Rural society. Clear? Tribal feature and pastoral feature will be continued or not? Yes, they will be continued. वो तो आज भी continued. Tribal feature, pastoral feature. ठीक है? That is still continued. इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. There are a lot of points that I have discussed between the classes. But if you will write that much, that is not a good idea. Okay? If you are able to indicate 4 points on each side, that is sufficient. 4 points में से priority based, जैसे आप 4 वर्णा system को मत छोड़ो लिखना. Subordination of women you must write. Got it? So I think that if you write 4 points here, 4 points and again 4 points, एक parameter ले लो. Okay, 4 points, 4 points. So I think that part 1 is clear. Part 1 is clear. Now what is the second part of the question? And whenever you are reading question, okay, अच्छा यहाँ पहले कोई बात नहीं. Economy. So we will write economy. इससे कोई problem नहीं है. Now part B. Part B. We will write about economy. So draw this structure in your answer. ठीक है? And then divide it into two parts. One is RVP and the second is LVP. Okay, RVP from 1500 BC to 1000 BC and LVP from 1000 BC to 600 BC. Simply we can write. और आप ज्यादातर वो चीजें लिखो पहले जो आपको पता है. ठीक है? इसीलिए कहता हूँ क्लास लेक्चर्स पे हमेशा ध्यान. What I teach in the classes and what you have already discussed, it will be very easier for you to, okay, recall those things. इसीलिए नए कंटेंट को बार बार पढ़ना सही नहीं है. ठीक है? एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ो, दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू. ये पूरा वैदिक पीरियड आर एस शर्मा क्लास 11th एनसीईआरटी, old NCERT, when you will read Vedic period, this aspect has been discussed in very detail. वहीं पे है, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया, because in classes I usually follow that NCERT based approach. Now in tribal economy, तो ऋग वैदिक पीरियड में which kind of economy is there? Tribal economy, pastoral economy. So this exactly, तो first point is tribal economy, pastoral economy. बस इतना ही लिखना है. Tribal economy, pastoral economy, tribal economy, pastoral economy. What is the second point? तो देखो, there are two things. There is no urbanization. Tribal economy, pastoral economy, rural economy, there is no urbanization. So if there is no urbanization, it means two economic activities will be the most important. One is what? Pastoral activities, and the second is agriculture. अब यहाँ पे सबसे important बात है कि pastoral activities and agriculture, out of these two, which is more important in Rig Vedic period? Pastoral activities. And later Vedic में क्या हो जाएगा? Agriculture will be more important. ठीक है ना? Than pastoral activities. So here you can draw a structure. ऐसे एक indicate लिख सकते हो, indication
the examiner will understand that pastoral activities and agricultural activities. Agricultural activities. Pastoral activities, agricultural activities. लिख लिया आपने? What does this indicate? Am I audible? Vipin? What does this indicate? What does this indicate? That which is more important? This is more important. हो गया? सॉरी मैंने शायद गलत लिख दिया. 1 second प्लीज. अपोजिट ये, हाँ ये ऐसे होगा. This will be like this. Okay, please make it correct like this. Okay, pastoral activity is more important here and agricultural activities is less important, but agriculture is there. Agriculture तो रहेगा ना, right? अच्छा देखो यहाँ पे जब आप आओगे, so what will be the nature of economy? Again, rural economy. Here you will write rural economy. And second point is what? इसी को reverse कर दो. Agricultural activities here will be more important than the pastoral activities. Agricultural activities more important than the pastoral activities. और यहाँ पे agricultural activities के important होने का reason क्या? Any one of you? Can you give some hint? Very good. तो देखो पूरा you don't need to write the entire sentence. Draw a structure like this and you will write that use of iron started nearly 1000 BC. यही है ना? तो यूज ऑफ आयरन से क्या हो जाएगा? राइट, टू थिंग्स. कटिंग ऑफ फॉरेस्ट प्लस okay, deep tilling, because iron plows will be there. Deep tilling because of iron plow. Only write indications or hint. Don't write the full sentence. Examiner will understand that what you want to say. Right? Use of iron. Okay. Nearly 1000 BC. Cutting of forest and deep tilling. Iron plow. इतना लिखना एकदम मैथमेटिक्स की तरह, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स और फिजिक्स. बिल्कुल ये नहीं सोचना है हिस्ट्री का आंसर लिखा है. राइट, नाउ कम हियर. ओके, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, economic, you can say that most important unit in this economy, most important medium of exchange. सबसे important यहाँ पे क्या है? Cow. Right, cow is the most important economic unit. Cow. Okay, I have already discussed with you the importance of cows. Cow सबसे important है ना? तो pastoral activity और इसमें भी the most important medium of exchange is what? Cow. So cow is important here in this economy. Cow is important. Now, और क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है? कैन यू टेल मी? जो पहले से चला आ रहा है, ऋग्वैदिक पीरियड के पहले से, जैसे एक, वेरी गुड, पॉटरी क्राफ्ट. राइट दिस, पॉटरी क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट भी होगा कि नहीं? यस और नो? यस. आयरन से दे आर नॉट फैमिलियर, बट द अदर मेटल्स दे आर फैमिलियर. ठीक है, मेटल क्राफ्ट, पॉटरी क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, पॉटरी क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट. और क्या हो सकता है? यूज ऑफ कॉइन्स, प्रेजेंट और नॉट यहाँ पे. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? यूज ऑफ कॉइन्स, नो. सो व्हाट इज द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज? बार्टर सिस्टम. गुड, बार्टर सिस्टम. नाउ लेट्स कम टू दिस साइड. 4 पॉइंट्स यहाँ लिख लिया, काफी है. 4 to 5 पॉइंट्स कितना लिखना है? राइट, बिकॉज देयर इज अ लिमिटेशन. नाउ हियर, इफ यूज ऑफ आयरन इज देयर, इससे क्या होगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन and productivity will increase. So you will write this point. इससे क्या होगा? Diversification in craft होगा कि नहीं? But economy is still rural. ये बात लिखना है आपको. Obviously there will be diversification in craft, trade and commerce will increase, but the economy will be still rural. Don't write the full sentence. Diversification of agriculture, production, productivity increase, diversification of craft, but still the economy is rural. Okay, but here, what about system of exchange? You will say that yes, barter system, plus you can also write that precious metals also used for exchange. They were also used for exchange. Here you will give example of what? Nishak. बताया था ना आपको. What is that? Exactly.
इट इज नॉट कॉइन। तो यहाँ पे एक पॉइंट इंडिकेट कर दोगे, नॉट कॉइन, ऑर्नामेंट worn इन द नेक। इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि नाउ यू हैव अंडरस्टैंड कि which kind of economic activity was there, use of coin was there or not, pottery craft, wood craft, okay, metal craft, this all will be continued here. Pottery craft, wood craft, metal craft, many more crafts. That's why I have written here diversification of craft. So you have to give a hint to the examiner that yes, I am familiar with the approach. Approach हमें पता है, ठीक है, और हम आंसर लिख सकते हैं. So have you got this idea? इंट्रोडक्शन मस्ट बी सिंपल, उससे भी छोटा इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हो, इफ यू राइट लाइक दिस दैट, अगर आप लिखना चाहते हो कि वैदिक पीरियड इज एन इंपॉर्टेंट कल्चरल स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वैदिक पीरियड के आगे लिख दो 1500 BC टू 600 BC, ओके, देन कम टू द मेन बॉडी दैट सिग्निफिकेंट चेंजेस वर सीन फ्रॉम ऋग वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड, इतना भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है कि इंट्रोडक्शन में बहुत डायनेमिक स्टाइल लिखना है, नहीं, ओके, you have to perform average in all the answers if you want to be the topper, ठीक है, you don't have to perform excellent in all the answers, सारे आंसर लिखो एवरेज में, you will be the topper, उतना ही लोग लिख नहीं पाते. आप देखो क्वेश्चन में कितनी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट है, ओके, सो दिस एग्जाम इज ऑल अ ट्रैप. 2-3 साल वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं पूछा, आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे नहीं, ये तो आता नहीं है, बट वो पता चले ऐसे कुछ ऐसा पूछेंगे, जीएस मेंस में कोई दूसरे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे वेयर द नॉलेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड, सो देयर यू विल मिस, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, ओके. नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन पार्ट. व्हाट इज द कंक्लूजन पार्ट? वी विल राइट अ वेरी सिंपल कंक्लूजन हियर, वी विल राइट अ very simple conclusion. Write this conclusion, right? Cultural development during Vedic period, cultural development during Vedic period, cultural development during Vedic period resulted in the formation of Mahajanapads, resulted in the formation of Mahajanapads, resulted in the formation of Mahajanapads and rise of new religions, rise of new religions, okay, during 600 300 BC period, during 600 BC 300 BC period, cultural development during Vedic period resulted in the formation of Mahajanapads and rise of, okay, new religions during 600 300 BC period. मैंने क्लास में क्या समझाया था आपको? कंक्लूजन लिखना है तो क्या करना है, बाद के टॉपिक के साथ उसको क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है, बस इतना सा काम करना है. दूसरा कंक्लूजन लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट हियर दैट द developments that took place during 1500 to 600 BC, okay, paved the way for the growth and development of phase of second urbanization during 600 300 BC period. It depends on you how you want to write, but the simple formula of writing conclusion is the theme which you are writing connect it with the next development. That is a simple idea, and when you practice one idea, so you will be expert in that method. And for each and every answer, if you will start practicing different methods, what will happen? You will be quite confused. ठीक है, confusion हो जाएगा. Got it? Are you getting my point? Clear? This is one answer I have already discussed with you, and this is on the same format like I have taught you in the class. Now, what is the source? Source क्या है? Simply NCERT book. And in classes, I have emphasized again and again that UPSC does what? One part is political history. ध्यान रखना. One part is social, religious, cultural history, economic history. Where they are focusing? Have they asked that discuss political system during the Vedic period? No. Are they asking about the Pallava rulers? Okay. Important Pallava rulers and the battles which they fought, the conflicts between Pallavas and Chalukyas? No. They are asking what? Cultural aspect, society, economy, right? Art and culture, right? These things are most important. But we need to know political development so that, okay, we could write a good introduction. इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस फेज का डेवलपमेंट है. तो
So what is the source? Very simply, the source is old NCERT. R.S. Sharma book. R.S. Sharma book. Go and read the Vedic period. You will get this question in detail. ठीक है, इससे better कुछ है ही नहीं. Now we are coming to the second question. So this question is what? Estimate the contribution of Pallavas, okay, for the development of art and literature of South India. Okay. So the question is related to what? Pallavas of Kanchi. The second important keyword. And in paper you must highlight the keywords. Pallavas of Kanchi. Development of art and literature. Okay. This we have to write. And again here the word limit is 150 word. And this is a 10 marker question. 10 marker question. Now, if you remember when I was discussing classes, ठीक है, क्लास जब मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ, so there I discussed NCERT chapters with you. मैंने आपके साथ NCERT chapters भी डिस्कस किए, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना? If you remember that, okay, so I have discussed NCERT chapters also, right? And in NCERT there is a chapter that is 300 to 750 AD, न्यू फेज, दैट इज द सेकेंड हिस्टोरिकल फेज. क्लास में डिस्कस किया था, याद करो, क्राफ्ट, ट्रेड एंड टाउन, जिसमें हमने डिस्कस किया था लेटर मौर्यन पीरियड. और उसके बाद एनसीईआरटी का ये वाला चैप्टर, न्यू फेज 300 to 750 AD. एंड इन क्लासेस आई हैव टोल्ड यू दैट दिस पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेम पार्ट. 300 to 750 AD, यहाँ आपको मिलेगा पल्लवा, यहाँ आपको मिलेगा राष्ट्रकूटा. देयर आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ओके, so I will discuss the answer of this question, but before discussing the answer of this question I will discuss the content that has been given in the NCERT. ये ऐसा करते हैं, पहले मैं आंसर डिस्कस कर देता हूँ, then I will discuss the content, otherwise it will take a lot of time. ठीक है, टाइम वैसे भी हम एक्सीड कर जाते हैं, तो पहले आंसर ही डिस्कस कर लेते हैं. Now this topic is what? Pallava art. Okay, now one most important point here is that when we are writing the introduction of the पल्लवा रूलर्स, तो हाउ वी शुड स्टार्ट, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कैसे स्टार्ट करें या क्या लिखें? तो देखो क्या है, पल्लवास के बारे में जब आप लिख रहे हो, सो इन इंट्रोडक्शन पार्ट अगेन वी आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, देन यू आर गोइंग टू डिस्कस मेन बॉडी, एंड देन यू आर गोइंग टू डिस्कस कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन, what is the basic purpose here? Okay, what is the basic purpose here? To support the main body, that is the basic purpose, isse zyada nahi. But when you write introduction, here you will have to introduce what? Who were the Pallavas, or what is the time period in which the Pallavas ruled. Clear? These things you have to address in your introduction. And in main body again it is asking how many aspects? Two aspects. One is what? In part 1 you will write about art, and in part 2 you will write about literature. In part 1 you will write about art, and part 2 you will write about literature. ठीक है, एक बात मैं बताऊं, यहां ध्यान रखना है, इन द सेम पेपर देयर आर टू क्वेश्चंस. दिस इज आस्किंग आर्ट एंड लिटरेचर, एंड नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. ओके, दिस क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट? आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो ध्यान रखना मैंने कई सारे वीडियो देखे, लोगों ने पूरा का पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस कर दिया इस आंसर में. यू डोंट हैव टू डू दिस. ओके, यू डोंट हैव टू डिस्कस ऑल टेम्पल आर्किटेक्चर. पल्लवा में वहां जाना ही नहीं, राइट? What you have to do, okay, I am just coming to that point. You have to be alert with the UPSC question. It is asking about art now, okay? So in art form, what you are going to discuss, that is one of the most important thing. ठीक है ना? आर्ट फॉर्म में आप क्या डिस्कस करोगे? आर्ट में सिंपली यहाँ पे आप क्या डिस्कस कर सकते हैं? आर्ट में हम किसकी बात कर सकते हैं? म्यूजिक की बात कर सकते हैं, राइट? दिस आर्ट में वी कैन टॉक अबाउट व्हाट? म्यूजिक. ओके, वी कैन टॉक अबाउट पेंटिंग ऑल्सो. पेंटिंग का कुछ रेफरेंस मिलता है तो इसके बारे में भी बात कर सकते हैं. वी कैन टॉक अबाउट एनी रेफरेंस ऑफ थिएटर और ड्रामा ऑल्सो. वी कैन टॉक अबाउट एनी रेफरेंस ऑफ थिएटर और ड्रामा ऑल्सो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पेंटिंग, सॉरी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आर्ट, तो
टेम्पल में आप क्या बात करोगे? टेम्पल आर्ट, इफ यू आर राइटिंग टेम्पल आर्ट, सो व्हाट यू विल राइट? तो देखो, टेम्पल आर्किटेक्चर में यू विल डिस्कस अबाउट द बिल्डिंग आर्किटेक्चर, बट टेम्पल आर्ट की जब बात आप करोगे, आर्ट की बात करोगे, तो यू विल टॉक अबाउट स्कल्पचर्स इन द टेम्पल, यू कैन टॉक अबाउट पेंटिंग्स इन दैट टेम्पल। मेरी बात समझ गया ना? स्कल्पचर, पेंटिंग, इनकी बात करोगे तो वो हो गया टेम्पल आर्ट। ठीक है, सो हियर वी कैन राइट अबाउट व्हाट? स्कल्पचर, स्कल्पचर्स इन द टेम्पल्स। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया टेम्पल आर्ट। दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ टेम्पल आर्ट। एंड कैन वी से दैट लिटरेचर इज आल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ आर्ट? यस और नो? यस, बट दिस पार्ट वी हैव टू डिस्कस सेपरेटली। लिटरेचर को हमें क्या करना है? वी हैव टू डिस्कस सेपरेटली। सो लिटरेचर वी विल डिस्कस सेपरेटली, लिटरेचर you have to discuss separately. But in this question there is a limitation, and what is that limitation? Word limit. We cannot write a lot of things, there is no such scope. So we will have to be very alert while writing the answer of this question. हमें बहुत alert रहने की जरूरत है. So in intro again the same formula, 50 20 25 जितने में हो जाए, this should be the words we are going to use. In conclusion also maximum 10 15 20, there is no any fixed limit, गिनना नहीं है, but this should be an idea. When you will do practice you can learn. So first let's write about the introduction. So write the introduction. Introduction. Okay. Introduction part. Right. Okay. Pallavas where? Pallavas where? Pallavas where? Prominent power. Simple introduction. Pallavas where? Pallavas where? Prominent power. Pallavas where? Prominent power in South India. Prominent power in South India between prominent power in South India between, okay, 4th to 9th century AD. Third, fourth भी आता है, 4th to 9th century AD. They were the prominent power in South India between 4th to 9th century AD. एक और बात यहाँ पे हम लिख सकते हैं, that will give a good impression on the examiner, that read this, Satavahanas in Deccan, Satavahanas in Deccan were later replaced by Pallavas. Satavahanas in Deccan were later replaced by Pallavas. And why I am writing, there is a special reason behind this. Satavahanas in Deccan were later replaced by the Pallavas. Got it? We have written the introduction. Why I have written Satavahanas, mentioned Satavahanas to give an impression or hint to the examiner. Yes, Vipin, बताओ क्यों Satavahanas? Exactly. Pallavas, okay, where the Satavahanas in Deccan were replaced by the Pallavas. So obviously Pallavas were the feudatories, but why I have mentioned Satavahanas in Deccan? इसका एक reason है. Deccan controlled by Satavahanas, in classes I have discussed, acted like a cultural bridge between north and south. ध्यान से समझो. So it means that the cultural traditions from north will reach to the south via Deccan. Brahminical elements will reach from north to south via Deccan. Got it? Brahmin grants, villages were given to the Brahmins by these rulers, Pallava rulers. ठीक है? और पल्लवा रूलर के टाइम में तमिल लिटरेचर के साथ साथ संस्कृत लिटरेचर भी तो पॉपुलर है. तो ये क्या दिखला रहा है कि ब्राह्मणिकल एलिमेंट्स एंटरिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वाया दक्कन. तो इसमें सातवाहना का सबसे बड़ा कल्चरल कंट्रीब्यूशन है, और उसी लिगेसी को किसने कैरी किया? पल्लवास ने. और फिर पल्लवास की लिगेसी को किसने कैरी किया? चोलास ने. चोलास, हाँ, मतलब लेटर. तो इसीलिए तो कहा जाता है कि चोलास के टाइम पे क्लाइमेक्स था डेवलपमेंट का. मेरी बात समझ गया ना? So this concept we learn from what? NCERT book. So that we can use. So if you will write one simple sentence, that will make a very good impression on the examiner. हालांकि ये आपके आंसर को बड़ा करेगा, but many a time such kind of concepts give a very good impression on the examiner. So in main body you will start like this, write this, main body, write this. Okay, Deccan was a cultural bridge between north and south. Deccan was a cultural bridge
between north and south. Deccan was a cultural bridge between north and south. Deccan was a cultural bridge between north and south. Right? Got it? Deccan was a cultural bridge between north and south. North और south के बीच में Deccan क्या है? It was a cultural bridge. Okay? And right, next point, that Pallavas carried forward the legacy of Satavahanas in Deccan and South India. Pallavas carried forward the legacy of Satavahanas. Pallavas carried forward the legacy of Satavahanas. Pallavas carried forward the legacy of Satavahanas, right, in Deccan and South India. पल्लवा ने क्या किया? लीगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया. उसके बाद यहाँ पे मेंशन क्या है? कांची. तो बताना पड़ेगा ना व्हाट इज कांची. सो राइट दिस. कैपिटल वाज कांचीपुरम. मेन बॉडी में पहले लिखते जाओ. कैपिटल वाज कांचीपुरम. कैपिटल क्या था? कांचीपुरम. कैपिटल वाज कांचीपुरम. ठीक है. राइट. लैंग्वेज. लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या था? तमिल, प्राकृत. लैंग्वेज तमिल, प्राकृत. तमिल, प्राकृत. Language was Tamil, Prakrit. Right. Sanskrit. 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 Sanskrit ऑफिशियल लैंग्वेज है. ये इसका इंपॉर्टेंस है. You can write Sanskrit as the official language. Sanskrit as the official language. और मैं यहाँ जो कुछ भी बता रहा हूँ, all this content is from NCERT book, the same chapter. क्लास के बाद ओपन करके देखना और पॉइंट्स आपको मिलेंगे. ठीक है ना. अब एक और बात देखो यहाँ क्या है. कांची की बात आई है तो कांची इज द कैपिटल. And Kanchi was the seat of Sanskrit learning in South. This is also important point. So where you have read Kanchi, write this, that Kanchi was the seat of learning. Kanchipuram was the seat of learning, seat of Sanskrit learning, sorry, seat of Sanskrit learning in South India. It was an important seat of Sanskrit learning in South India. Okay. Right, next point. All these are the aspects of what? Art. ये सब आर्ट एंड कल्चर में आएगा. गॉट इट. ओके. संस्कृत लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, ये सब आर्ट का हिस्सा होता है. ओके. संस्कृत लैंग्वेज तो उधर भी आ जाएगा, लिटरेचर वाले में आ जाएगा. राइट वन मोर पॉइंट. राइट वन मोर पॉइंट. दैट इज राइट. ओके. पल्लवा किंग्स primarily were inspired by Shaivism. Pallava kings were primarily inspired by Shaivism. Shaivism. Okay. Right, next point. They also patronized growth and development of bhakti movement in South India. They also patronized growth and development of bhakti movement in South India. Growth and development of bhakti movement in South India. There are also some basic points here जो आप लिख सकते थे, बट आप थोड़ा सा अब कुछ स्पेशल फोकस आज कर लीजिए आर्ट पे. That in art we are going to discuss part A, art, and in art let's write a few points about the music. Music के बारे में कुछ points लिखो. Write point 1. Okay. Some of the famous, read this, famous musical instruments of Pallava period. Famous musical instruments. Famous musical instruments. इतना ही लिखो because it will consume more word if you will write Pallava period. So famous musical instrument. One is Yaji. Famous musical instruments. One is Yaji. The second is Mridangam. The second is Mridangam. One is Yaji. The second is Mridangam. And the third is Murasu. Murasu. Right? Yaji, Mridangam, and Murasu. Okay. Right, next point. Some inscriptions, right? Some inscriptions show the interests of personal interests of some inscriptions show the personal interests of Pallava rulers in music. Some inscriptions show personal interest of Pallava rulers in music. ठीक है. अब देखो, the names are typical यहाँ.
ठीक है, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, इफ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप, देयर इज नो एनी नीड टू राइट बिकॉज दिस इज अ जनरल स्टडी पेपर. ओके, बट आई एम राइटिंग द नेम. एग्जाम में नहीं लिखोगे, भूल जाओगे उसको, बट आई एम राइटिंग हियर, राइट सम इंस्क्रिप्शंस में two names I am writing here. This will not write in your exam, right? Okay. Kuddu Mia Malay. Kuddu Mian Malay. Kuddu Mian Malay. Kuddu Mian Malay inscription. ठीक है. और एक दूसरा इंस्क्रिप्शन है. The name of that inscription is Thirumayan inscription. Thirumayan inscription. These inscriptions show the interest of Pallava rulers in the music. Okay. Right. अच्छा देखो, मैंने कहा उनका इंटरेस्ट था. Some rulers were expert in music, right? Some Pallava rulers were expert in music. ये डिफिकल्ट लगे तो इसको हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. Those things, some Pallava rulers were expert in music. नोट्स से उन सारी चीजों को हटा दो जिसको आप मेंस एग्जाम तक नहीं लेके जा सकते. धोने का मतलब क्या है, जब पता ही है कि पहुंच नहीं पाएंगे वहां तक लेकर. ठीक है, सिंपल इंफॉर्मेशन. अब ये इंफॉर्मेशन सिंपल है, राइट. महेंद्र वर्मन फर्स्ट and Narasimha Varman first. This you can easily remember. Some rulers, okay, were interested in music. One is what? Mahendra Varman first and Narasimha Varman first. Narasimha Varman first. ये खुद ही interested थे. अब म्यूजिक में इतना काफी है. Now we are coming to the second part, that is, okay, right, dance. Art का दूसरा expression क्या हो गया? That is dance. So write this, dance. Dance, right. Pallava rulers also patronized dance. जहां पे words बचा सकते हो बचा लो. Pallava rulers also patronized dance. और ये कैसे पता चलता है? So it is evident from the sculptures of the temple. टेम्पल में जो स्कल्पचर्स हैं वो डांस पोज में, उसको देख के पता चलता है, इतनी सी बात है. सो राइट दिस, it is evident from the sculptures in the temples. It is evident from the sculptures in the temples. Temples में जो sculptures हैं उससे पता चलता है. Got it? Now dance we have explored. Now come to the third aspect. पे आना. Let's discuss one more aspect. The third aspect. Right. Third aspect is painting. Painting. So right, painting में क्या है? यहाँ पे भी कुछ कॉमन पॉइंट जो हम पहले से ही जानते हैं. राइट दिस, टेम्पल्स कंटेन वॉल पेंटिंग्स, ओके, म्यूरल पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स, म्यूरल पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स, म्यूरल पेंटिंग्स, ठीक है ना. अच्छा देखो, इफ यू आर राइटिंग अबाउट पेंटिंग, सो व्हाट विल बी द थीम? गेस कर सकते हो कि द पेंटिंग थीम कहां से लिया जाएगा? डिपिक्टेड फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी. सो राइट दिस, ओके, themes, right, depicts scenes from the painting. Right this, the paintings did what? They depicts scenes from Hindu mythology. The painting depicts scenes from Hindu mythology. ठीक है, हिंदू माइथोलॉजी के सीन्स आ जाएंगे. गॉट इट? हिंदू माइथोलॉजी सीन्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अब हम आ जाते हैं टेम्पल. सो राइट दिस, टेम्पल, राइट. टेम्पल आर्ट एंड आर्किटेक्चर was also a significant achievement. Temple art and architecture was also a significant achievement. देखो यहाँ पे हम पूरा डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, राइट. इट मीन्स यहाँ पे देखो आप लिख सकते हो ऐसे कि रॉक कट केव टेम्पल्स, रॉक कट केव टेम्पल्स प्लस रॉक कट केव टेम्पल्स प्लस, ठीक है. और क्या है? स्ट्रक्चरल टेम्पल्स वेर ऑल्सो सीन, मोन्यूमेंटल रथास वेर ऑल्सो सीन. good. Monumental rathas, structural temples. यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं जाना है, ओनली गिव अ हिंट टू द एग्जामिनर कि मुझे थोड़ा टेम्पल के बारे में भी पता है, ठीक है. एग्जाम्पल लिखना है तो यू कैन राइट हियर दैट कैलाशनाथ टेम्पल इन कांचीपुरम बिल्ट बाय नरसिम्हा वर्मन II. क्योंकि कांची की बात हो रही है तो एग्जाम्पल में आप लिखोगे
Kailasnath temple in Kanchipuram. Kailasnath temple in Kanchipuram. Example is what? Kailasnath temple. Kailasnath temple in Kanchipuram. Kailasnath temple in Kanchipuram built by Narasimhavarman II. So this much information. Okay. Now this is what? Art. इसी को हम क्या कहते हैं? Art. Here we don't have to give a special focus on temple architecture. बट चोलाज में एक पार्ट क्या है? टेम्पल आर्किटेक्चर. ये ध्यान रखना आपको. और चोलाज में टेम्पल आर्किटेक्चर पूछा भी क्यों है? क्योंकि द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर जो है इट स्टार्टेड ड्यूरिंग पल्लवास. और जितने भी साउथ इंडिया में टेम्पल आर्ट फॉर्म्स है उन सबको एक तरह से इंक्लूड कर लेता है कौन? चोला टेम्पल आर्किटेक्चर. दैट इज द क्लाइमेक्स फॉर्म. द्रविडियन के फीचर्स लिख देने हैं वहां. इतना सा आसान सा ट्रिक है जो मैंने क्लास में बताया था. नाउ दिस इज व्हाट? Pallava art. Now you have dealt with how many part? One part of the main body. Now just think that if you are writing full sentences, will you able to write the answer? No. We have to write what? Indicative hints, points, bullet forms. Now just imagine that if, okay, I will discuss at least 200 such topics with you. That literature during Vijayanagar period, literature during the Rashtrakutas, literature during Pallava period, literature during Cholas period, literature during Bahmani period, literature in Vedic period, okay, literature during Mauryan period, literature during later Mauryan period, literature during Gupta period. अगर मैंने ये टॉपिक ऐसे डिस्कस किए तो जस्ट इमेजिन प्रीलिम्स में आपको कितना बेनिफिट होगा. पहले तो ये सवाल कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं. दूसरी चीज, the same information you can use in what? Main exam while writing such kind of answer. But problem क्या है? I am not able to discuss those themes in the regular classes. What is the problem? Why? Because you are not familiar with the elementary history. कुछ नहीं पता आपको. You are not familiar with the medieval age. You are not familiar with the name of Sher Shah Suri. So I have to teach everything in a chronology. So I don't get sufficient time. So in classes we read about ancient, medieval and culture. After finishing this module of world history or modern India, इसी के parallel I will start another module that is art and culture. There I will discuss selected themes and all those selected themes are going to be very much important for you in the exam in the very next year. तो कुछ मॉड्यूल्स पे आप काम करते रहो क्योंकि मैं तो पढ़ा सब दूंगा लेकिन मेरे पास उतना टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है. गॉट इट? तो जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा उस पर काम करते रहो. इकोनॉमिक्स सर्वे, करंट अफेयर, हिस्ट्री रिलेटेड करंट अफेयर भी पढ़ाऊंगा. तो आप अपनी स्ट्रेटजी को कुछ ऐसे सोचो कि इफ यू आर कंफर्टेबल इन 15 to 18 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स, अगर उतना मैं आपको करा देता हूं, ठीक है, 50 क्वेश्चन में से कितना आपने कर लिया? 1/3. गॉट इट? ठीक है. तो अगर हमने अपने टारगेट को पार्ट पार्ट में डिवाइड कर लिया तो हम आसानी से अचीव कर सकते हैं. प्लस द सेम थिंग्स विल बी हेल्पफुल इन आवर मेंस एग्जाम. द सेम थिंग्स विल बी हेल्पफुल इन आवर एसे राइटिंग. ये भी तो सोचो. ठीक है. तो थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा. जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शंस हैं वी विल हैव टू फॉलो अ डिफरेंट अप्रोच, अ डिफरेंट स्ट्रेटजी. ठीक है. जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे काम नहीं चलेगा कि भाई रेस चल रही है कि 15 डेज में 10 डेज में टीचर ने खत्म कर दिया. इससे रिजल्ट नहीं होगा. जो रिजल्ट होता है फिर ऐसे केस में वो बच्चों की अपनी मेहनत से होता है. गॉट इट? है ना? और अगर टीचर सही से काम कर दे तो ट्रस्ट मी, ठीक है, बच्चे बहुत स्मार्ट हैं. ये जो नई जनरेशन है, हमारी वाली जनरेशन तो बहुत भोदू टाइप की थी. ठीक है. आप लोग बहुत स्मार्ट हो. ठीक है. तो थोड़ा सा बट स्मार्टली वर्क करना है और मैं ये जानता हूँ कि रिजल्ट होगा. एवरेज स्टूडेंट से रिजल्ट होगा. ठीक है. उसके लिए कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं चाहिए. एवरेज स्टूडेंट हु आर रेगुलर, ओके, हु अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एग्जाम, ठीक है, तो रिजल्ट हो जाएगा. ये याद हो जाएगा आपको पॉइंट. अब इसको याद भी कर लेना. इट्स नॉट ओनली आंसर राइटिंग सेशन कि मैं आऊं और एक पीपीटी रट के चला जाऊं ऐसे करके, नहीं. ये पॉइंट आपको याद भी रखना है कि नेक्स्ट टाइम इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम, आप क्या करो, कंफर्टेबली लिख लो कि आपको पता है. नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज लिटरेचर. सो लुक एट द क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? पल्लवा. दिस इज द क्वेश्चन ना. सो कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची. कांची का भी हिंट हमने दे दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया. वी हैव डिस्कस्ड द एजेस, वी हैव डिस्कस्ड दैट आफ्टर सातवाहनास पल्लवास कम. बहुत इंफॉर्मेशन दे दिया एग्जामिनर को.
Now we are going to write about the literature. That is part 2. So write part 2. Part 2 is literature. So part 2 is literature. Again it is a part of art. ये art का ही तो part है. But it has been asked in detail. अच्छा पल्लवा literature में क्या है? तो देखो, write this. Why it is remarkable? So write this. Remarkable for the growth of. It is remarkable for the growth of Sanskrit, and it is remarkable for the growth of Sanskrit and Tamil literature. It is remarkable for the growth of Sanskrit and Tamil literature. और क्या बता देंगे if you are talking about literature? तो कांचीपुरम, कांची और कांचीपुरम, this was what? An important center for Sanskrit studies. Sanskrit studies or learning. Don't write full sentence. फिर तो आपके words consume हो जाएंगे, right? कांचीपुरम and center for Sanskrit learning. ऐसे लिख दो. Now if I write here, okay, right. Some read this. Great scholars. If you are writing about great scholars, obviously you are writing about पल्लवा पीरियड लिटरेचर. स्कॉलर का नाम पता है तो लिख दो. अब जो स्कॉलर्स मैं आपको लिखने जा रहा हूं, बोथ स्कॉलर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. वन इज दांडिन, राइट. द नेम ऑफ वन स्कॉलर इज दांडिन. दांडिन ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना. एंड द नेम ऑफ नेक्स्ट स्कॉलर इज भारवी. दांडिन, दांडिन एंड भारवी, ठीक है. Dandin was the court poet of Narasimhavarman II. This can be asked in exam, so please write this. आप इतना लिख के आगे बढ़ सकते हो एग्जाम में, ठीक है ना. बट इसलिए बता दे रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. राइट दिस. was the court poet of Narasimhavarman II. Dandim was the court poet of Narasimhavarman II. This information is important for prelims. Here you can mention two names, Dandin and Bharvi only. ठीक है ना. Bharvi, राइट. ही वॉज द राइटर ऑफ द बुक. यहाँ पे ये बुक का भी नाम इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स. एग्जाम में यहाँ नहीं मेंशन करना, चाहो तो लिख सकते हो किरातार्जुनियम. किरातार्जुनियम, ओके. दिस इज वन ऑफ द फेमस बुक रिटन बाय, ओके, भारवी. और ये पल्लव किंग सिंह विष्णु के कोर्ट में था. सो राइट दिस. ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ पल्लवा रूलर सिंह विष्णु. कोर्ट पोएट ऑफ पल्लवा रूलर सिंह विष्णु. क्लियर. नाउ यू कैन राइट वन मोर पॉइंट हियर जो आप इजीली याद रख सकते हो. वो क्या है? राइट फोर्थ पॉइंट. राइट. अलवार्स एंड नैनार्स. मैंने क्लास में पढ़ा है अलवार नैनार. राइट. अलवार्स एंड नैनार्स कंपोज्ड. अलवार्स एंड नैनार्स. अलवार्स एंड नैनार्स composed their hymns in Tamil language during this period. Tamil language during this period, right? Alavars and Nanars composed their hymns in Tamil language during this period. Okay, got it? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्स का भी नाम है दैट आई एम नॉट मेंशनिंग. ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा. सो दिस मच इज सफिशिएंट. ओके. नाउ हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव डील्ड विद. इसमें भी एक हमने हिंट दे दिया, लिटरेचर. दिस मच इज सफिशिएंट. पल्लवास 150 वर्ड का ही क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. राइट. आर्ट एंड लिटरेचर वी हैव रिटन. नाउ वी विल राइट द कंक्लूजन, अ वेरी सिंपल कंक्लूजन. सो राइट दिस कंक्लूजन, कंक्लूजन, कंक्लूजन. ठीक है. Conclusion क्या होता है? I have discussed with you previously also that when you are writing conclusion, what you have to do? You have to relate it with the next phase of development. और क्लास में आपको बताया पल्लवास जो है, देखो 4th to 9th century AD. और what is the imperial phase of Cholas? किसी को याद है? क्लास में बताया मैंने. वेरी गुड. 9 to 12th 13th century. तो पल्लवा पीरियड में जो कल्चरल डेवलपमेंट है, इट विल रीच एट इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग द चोलास. तो पल्लवास को किससे कनेक्ट करना है? चोलाज से. तो राइट दिस. दिस इज द कंक्लूजन. सो राइट दिस. द कल्चरल, राइट दिस, द कल्चरल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग पल्लवास. द कल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग पल्लवास. और ये मॉडल आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है.
प्रैक्टिस कराऊंगा जब मैं आर्ट एंड कल्चर कराऊंगा. आई विल आस्क यू टू राइट 10 इंट्रोडक्शन फॉर वन क्वेश्चन. अलग अलग मॉडल के इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस करो. तो जैसे ही आप ये प्रैक्टिस रिपीट करोगे, व्हेन यू विल डू इट विथ 50 और 100 क्वेश्चंस, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा इंट्रोडक्शन लिखने में. ठीक है ना. सो द कल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग पल्लवास, राइट, reached at its climax, reached at its climax during Cholas. हो गया. दिस इज द इंट्रोडक्शन. हाउ मेनी वर्ड्स इंट्रोडक्शन में? कितने वर्ड्स हैं देखो. और इंट्रोडक्शन ने उसी फॉर्मेट को फॉलो किया कि नहीं? द इंट्रोडक्शन हैज फॉलोड द सेम फॉर्मेट दैट आई डिस्कस्ड विथ यू. इट इज फॉलोइंग द सेम फॉर्मेट. ओके, introduction following the same format. Now, what is the next question? This we need to discuss. अगला question क्या है? Okay, quit India. Okay, I am coming to that. How many of you were in modern Indian history module? कितने लोग थे? अच्छा, केवल आप ही थे. अच्छा, 2 लोग थे. This question I have already discussed in class. ये भी डिस्कस किया हुआ है. ठीक है. जब मैं ये कहता हूँ ना कि मेरी पढ़ाए गए लेक्चर से आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई आसमान से चीजें लाके पढ़ा रहा हूँ. आई एम कवरिंग द सेम एनसीईआरटी बुक एंड अदर थिंग्स. ओके, बट उनको कनेक्ट करके ठीक ढंग से आपको समझा देता हूँ. ये है, एंड दैट्स व्हाई आई एम कॉन्फिडेंट कि क्लास से क्वेश्चन आते हैं. और ये सिर्फ हिस्ट्री के बारे में दावा नहीं है. वॉट एवर आई विल टीच इन एग्जाम, यू आर गोइंग टू गेट 100% बेनिफिट फ्रॉम दैट मॉड्यूल. तो 3-4 मॉड्यूल तो फिक्स हैं जो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा. सोसाइटी, सोशल जस्टिस, एथिक्स, एसे, हिस्ट्री, ऑप्शनल. क्योंकि मुझे सारी चीजें हिंदी में भी पढ़ानी है, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं बच पा रहा है, नहीं तो सब कुछ पढ़ाता. ठीक है, इंक्लूडिंग सी सैट. तो छोड़ दे रहा हूँ, मैंने कहा इतना ही पढ़ाओ. ठीक है, चलो. व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट? टू आई एम पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट्स. तो दिस क्वेश्चन हैज हाउ मेनी पार्ट्स? क्वेश्चन पे हमेशा रफ मार्क करना सीखो. हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स अगेन. तो इन ऑल द क्वेश्चंस वी सी हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स. ठीक है, ये यही तो चैलेंजिंग पार्ट है एग्जाम का. मेरी बात समझ गया ना? दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ यूपीएससी एग्जाम. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रो, बॉडी एंड conclusion. Again, here there are 3 parts. So the topic is related to what? Quit India movement. So in introduction part, we have to focus mainly where? On Quit India movement. So what you will write here in introduction part? Just suggest me some introduction. बताइए क्या लिखोगे आप introduction? Right? Hmm. अच्छा देखो कितना सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं. QIM 1942 to 1944 was one of the significant mass movement in the history of mass movements in India. कितना आसान हो गया. हिस्ट्री ऑफ मास मूवमेंट्स क्या है? स्वदेशी मूवमेंट, CDM, QIM, यही सा NCM. तो आपने क्या लिखा? QIM ब्रैकेट में लिख दिया 1942 to 44 was one of the significant mass movement in the history of mass movements in India और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. कितना आसान है. सो राइट दिस. ओके, दैट. देखो और भी इंट्रोडक्शन हो सकते हैं. देयर कैन बी मल्टीपल इंट्रोडक्शन, बट वी विल राइट द मोस्ट प्रैक्टिकल वन जो बुकिश ना हो. ठीक है. सो राइट दिस. क्विट QIM, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 टू 1944. अब इससे आपने एज भी बता दिया एग्जामिनर को. क्विट इंडिया मूवमेंट was one of the most significant and we can write one more word, distinguished. Why distinguished? क्योंकि पहले वाले क्या थे? नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे थे. इसमें क्या था? लिमिटेड वायलेंस यूज था. So you can write here that it was one of the most significant and distinguished mass movement in the history of mass movements in India. In the history of mass movements in India. Okay, in the history of mass movements in India. This is the point. How many words are there? वही हमारा टारगेट वही है 15 to 20. इसी रेंज में रहना चाहिए. 10, 15, 20.
or 15, 20, 25 depending on the nature of the question. When the question will be more complicated, so introduction थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि आपको उसके मेन डिमांड को कैटर करना होता है. गॉट इट. नाउ we have to discuss main body. तुरंत यहाँ हाईलाइट करो मेन बॉडी में हाउ मेनी पार्ट्स. तो वन पार्ट इज व्हाट, इवेंट्स दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी वो इवेंट्स जिनकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ. ऑब्वियसली वी आर डिस्कसिंग फैक्टर्स आर द इवेंट्स. तो हियर मेन बॉडी विल हैव टू पार्ट्स. It will have two parts, right? Part 1 and part 2. It will have two parts. Part 1, बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? पीपीटी मॉडल नहीं है, ठीक है? लोग मुझे पिछड़े जमाने का टीचर कहते हैं बिकॉज आई डोंट यूज पीपीटी. आई एम डेलिबरेटली नॉट यूजिंग, ठीक है ना? और आपको भी नहीं करना चाहिए. एग्जाम में क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे क्या? नहीं, लिखना है. सो जस्ट डू प्रैक्टिस. P1 एंड P2. पार्ट 1 में क्या है, इवेंट्स. एंड इवेंट्स में क्या हो जाएगा, इवेंट सिंपली मीन्स व्हाट. ओके, हियर इवेंट्स मीन्स व्हाट, फैक्टर्स. अच्छा, फैक्टर्स भी दो तरह के होते हैं. वन आर द मेन फैक्टर्स एंड द सेकेंड इज व्हाट, इमीडिएट फैक्टर. हो सकता है कि नहीं, मेन फैक्टर एंड इमीडिएट फैक्टर. ये तो हम जानते हैं, हर टॉपिक में पढ़ते हैं. वी कैन रिलेट इट इन एवरी टॉपिक दैट फैक्टर्स आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स. One is main factor and the second is what, immediate factor. Okay, now what is the P2, results. Clear? Results of QIM. Obviously it is dealing with the impact part. But the question we have to write here in 150 word, again very challenging. So we will use the same bullet point structure. Point wise format we can write. दूसरा कोई तरीका नहीं है. If you will not use point wise format, you will not be able to write a good answer. ठीक है? So we have to deal with two parts, and lastly a conclusion we have to write. So I am going to discuss this part 1, that is events or the factors. So let's discuss main body part 1. Main body part 1. So in main body part 1, we have to discuss about events, okay, that led to QIM. Quit India movement. Quit India movement started when? 1942. I have told you one thing, that in such kind of questions, just draw a sketch if you are able to draw, and that will be capable of adding 1 or 1.5 marks in your answer. जहां पे भी एक larger development की बात हो, you must draw the sketch. Now I am simply drawing a sketch here. Look at the sketch. We are talking about Quit India movement now. Okay, so now I am drawing a sketch here. Swadeshi movement 1905, 1907, 08. ठीक है? Then I am drawing sketch here 1920, 22. Then what? CDM, civil disobedience movement 1930, 1932, 34. This is the sketch. ठीक है? Then what happened here? Next important point here. Okay, that is what you will write, outbreak of World War II. जिन जिन चीजों को रिलेट करना है you will write 1939, outbreak of World War II. हो गया 1939. And then you will again draw one more point here, that okay, different proposals, okay, that were given by British government, okay, to gain support of Indians, different proposals that were given by British government to gain support of Indians. कौन कौन से proposals British government ने दिए? Now you can draw here. You can write Linlithgow's offer. August offer 1940. Got it? Linlithgow's offer, August offer. ये क्या हो गया 1940?
Okay. Linlithgos offer August offer. What is the year? 1940. चलिए, अच्छा इसके बाद क्या होता है बताओ? लिनलिथगो अगस्त ऑफर फेल होता है तो देर इज अ मूवमेंट दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट. याद आ रहा होगा ना आपको? 1940. ठीक है, 1940. So this is 1939-40. Then you will write here individual satyagraha. Individual satyagraha. और ये ज्यादा वर्ड कंज्यूम नहीं करेगा. If you understand the theme, you can easily write. And then you will write the next and the most important part. And that is, इसके बाद आपको लिखना है जो सबसे important part है वो क्या है? Failure of Cripps mission. Failure of Cripps mission 1942. Failure of Cripps mission. Cripps mission कब है? 1942. And QIM started. Failure of Cripps mission and QIM started in 1942. 1942 to 1944. Now tell me how many words will it consume? कितने words consume करेगा? 1, 2, 3, 4, 5, hardly 10 to 15 words. But if you are not in a condition to write all the points and you are giving hints only, this sketch will give the examiner an understanding that you are familiar with the entire theme. And answer writing is what? Convincing someone of something. Essay writing is what? Convincing someone of something. हमेशा याद रखना है इस बात को. यहां पे आप बात नहीं कर रहे हो किसी से. कौन बात कर रहा है? योर आंसर. You are convincing someone of something, and this is the best way to convince someone of something, that you are drawing sketches. Now we will write the points. This is the simple sketch or diagram in main body. पहले लिख दिया. अब आप events को लिखना शुरू करोगे. What are the events? Now I am giving you the points in bullet format कि क्या events है. All of you have studied modern Indian history, so I will give 4 or 5 points here. Events क्या है? तो देखो, क्यों क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ? इसके पीछे रीजन क्या है? अगर ब्रिटिशर्स ने हमारी पॉलिटिकल डिमांड्स को पहले ही एड्रेस कर दिया होता, जैसे देखो अगर हमारी पॉलिटिकल डिमांड एनसीएम में एड्रेस हो गई होती, इन एनसीएम व्हाट वी हैव डिमांडेड स्वराज विद इन 1 ईयर, मिला नहीं, 1 साल से ज्यादा निकल गया. इन नेहरू रिपोर्ट व्हाट वी डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस, मिला नहीं. यहां पे ये भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐड कर लो इन दिस स्केच 1928. You must mention this. That is a very important, okay, development. Nehru report. Nehru report. अच्छा यहाँ पे क्या था? What was the main demand? स्वराज within 1 year. मिला क्या? नहीं मिला. Dominion status मिला क्या? नेहरू रिपोर्ट Dominion status नहीं मिला. Civil disobedience movement. Okay. Again we are fighting for what? Complete independence. Complete independence. मिला क्या? Complete independence नहीं मिला. नहीं मिला. Then Simon Commission came and what happened? No any single member was Indian. हमने खूब हंगामा किया, क्या उसमें कोई मेंबर इंडियन बना? क्या नहीं बना. What does it show? That British government always show, okay, and British government did not pay any attention to the political demands raised by Indian nationalists or Indian National Congress. Okay, that's why we see what? Multiple movements during the Indian national movement. And Quit India movement is the most radical among all these movements. इन सब में सबसे ज्यादा radical कौन सा है? Quit India movement. Why we are calling it most radical? Because here what is the demand? Demand is quit India. तुम हिंदुस्तान छोड़ के जाओ, हम अपना काम धाम देख लेंगे, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है. ठीक है. अगर आपके माँ बाप किस दिन कहे कि जाओ बेटा, अब हमें तुम्हारी हेल्प सब, जाओ जाओ देख ले, नहीं हमें अब बिल्कुल, इसका मतलब क्या है? मामला बहुत बिगड़ चुका है. तो ये वही चीज है पॉलिटिक्स. तो राइट दिस पॉइंट. दिस इज पॉइंट 1. ये मेन फैक्टर में आएगा. दिस पॉइंट विल कम इन द मेन फैक्टर. ओके, सो राइट पॉइंट 1 दैट British government did not pay, British government did not pay attention, did not pay attention to the genuine, to the genuine political demands, to the genuine political demands
of INC. British government did not pay any attention to the genuine political demands of INC. Okay, therefore, multiple, read this, multiple mass movements can be seen. Multiple mass movements can be seen. Multiple mass movements can be seen. ठीक है? And QIM was most radical among them. QIM was most radical among them. सबसे radical क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट. QIM was most radical among them. ठीक है? If you want to further explain it, अगर आप यहाँ पे भी sketch यूज करना चाहते हो, तो you have a great scope here. क्या sketch है? NCM स्वराज within 1 year. क्रॉस कर दो, मिला नहीं. ठीक है ना? Then what we see? Nehru report 1928. Dominion status. What you will do? Cross. Then the next is what? CDM. Complete independence. Rejected. Got it? Now, after CDM, okay, CDM, it was rejected. इतना भी काफी है. ठीक है? NCM, नेहरू रिपोर्ट, CDM. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या डिमांड दिया? तो वो क्या अटेंशन दिया? नहीं. So this is one reason. Got it? Now, point number 2. This is one event. This is one of the main event. Right? Point number 2. What is point number 2 here? Point number 2 क्या है? तो देखो, point number 2 में क्या है? Okay. तो जो दूसरा पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? राइट दिस दैट ओके आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ओके ब्रिटिश गवर्नमेंट्स अनाउंसमेंट. Outbreak of Second World War and British government's announcement that British government's announcement that India is a party with Britain. India is a party with Britain in Second World War. ये सबसे important point है. Outbreak of World War II 1939 and British government's announcement that India is a party, okay, with Britain in World War II. और ये भी क्या है? Without consulting Indian political parties. Without consulting Indian political parties. क्योंकि इलेक्शन हुआ था. ठीक है? There were legislative assembly, so without consulting. तो ये क्या है? ये क्या है? This is a great insult to right to self-determination. This is a great insult to right to self-determination. Why I am writing this story, you all know. First World War, US and all this. Clear? So this was a great insult to the right to self-determination. ये उसका great insult है. तो ये क्या होगा? Read this. Congress ministries resigned. Congress ministries resigned as a result. Congress ministries resigned as a result. Congress ministries resigned as a result. Now come to the next point. What is the next point? Congress ministries resigned as a result. Now what is the next point? तो देखो, कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया. इसका मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस मिनिस्ट्री इनके बीच में क्या हो गया? सिचुएशन ऑफ डेडलॉक. रेड दिस. Situation of deadlock between Congress ministries. Situation of deadlock between Congress ministries and situation of deadlock between Congress ministries and British government. Okay, and here you will write that different offers came one after another
different offers came one after another and they failed. Different offers came one after another and they failed. Different offers came one after another and they failed. ठीक है, one after another different offers will came and they failed. Now you will write here Lin Lithgow's offer, August offer. ठीक है, failed, failed. So what started? Individual satyagraha started. Individual satyagraha started. Individual satyagraha started. और इसके बाद क्या होगा? क्रिप्स मिशन. Write this. Cripps mission 1942 failed. Cripps mission 1942 failed. यहाँ we don't have to write about the details of Cripps mission. वो नहीं लिखना है. ठीक है ना? Cripps mission failed. And when Cripps mission failed, what happened? QIM started. Cripps mission failed, and what happened? QIM started. 42 to 44. Cripps mission failed, and QIM started. Now you have discussed all the points here. ठीक है? कि डिससेटिस्फेक्शन कब से है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम से. हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो वो नेशनल सेंटिमेंट्स क्या होंगी? दे विल कंसोलिडेट, द डिससेटिस्फेक्शन विल ग्रीव. ओके, और इसके बाद क्या है? नाउ 40 to 50 years have passed. Now people are familiar with the main causes of concern. Now there was, you can see that the level of political awareness has increased. So all these events lead to what? Outbreak of Quit India movement. Got it? Now the second part is what? Okay, इसके बाद अगला part क्या है क्वेश्चन? Okay, results. So simply you will write result. अब इसमें देखो वर्ड मत काउंट करना, रिजल्ट में आप हिंट दे सकते हो, हिंट देके 3-4 पॉइंट लिख सकते हो, दैट विल बी sufficient. It points matter here. ठीक है, because here we need to write in detail. थोड़ा सा डिटेल लिखना पड़ेगा. So write part 2. Part 2 you will write about the results. Results. What is the result of Quit India movement? Okay, QIA. Write this. Could not QIM could not, okay, realize its objectives. QIM could not realize its objectives. ये क्लास में कई बार प्रैक्टिस करा चुका हूँ रिजल्ट में. ठीक है, रिजल्ट मिला, could not realize its objective. अंग्रेज भाग थोड़ी ना गए 1944 में, तो it could not realize its objectives. Okay, right, next point. Right, was successful in mounting pressure on British government. It was successful on mounting pressure on British government. इसका रीजन क्या था? यहाँ पे लिमिटेड वायलेंस. ठीक है, एंड इट्स रेडिकल नेचर. अब अंग्रेजों को भी थोड़ा हमसे डर लगने लगा. लिमिटेड वायलेंस एंड रेडिकल नेचर. So it was successful in mounting pressure on the British government. So British government क्या करेगी? Write this. British government came with serious terms in negotiations. British government came with serious terms in negotiations. Why we are saying this? आप क्या बताओ? Cabinet mission. Can you say that cabinet mission was comparatively serious in its outlook? Yes, the answer is yes. तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन है, इसमें सीरियस टर्म्स हैं, प्रोविजंस हैं, तो इस पे इंपैक्ट कहीं ना कहीं किसका है? क्विट इंडिया मूवमेंट का ही इंपैक्ट है. दैट इज द इंपैक्ट. क्लियर? एंड दिस विल डू व्हाट? राइट, will also promote revolutionary spirit among masses. It will also promote revolutionary spirit among masses. It will also promote revolutionary spirit among the masses. Got it? क्या होगा? revolutionary spirit promote होगा तो ultimately cannot we say that INA movement or RIN mutiny got inspiration from QIM, we can say, right?
गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम QIM. इनको क्या मिला? क्विट इंडिया मूवमेंट से इंस्पिरेशन मिला. So can we say that it paved the way for the future political struggle, consolidated the nationalist feelings and sentiments? The same point that it did what? Consolidated. इतना ज्यादा मत लिखना, मैं बता दे रहा हूँ, एक दो सेंटेंस कम कर लेना, ठीक है ना? Consolidated national feelings and sentiments. National feelings and sentiments. Okay. We can lastly, it helped, it paved the way for, it paved the way for future political struggle in India. It paved the way for the future political struggle in India, and you can also include many more points. ठीक है? It paved the way for the future political struggle in India. Now you tell me that इसमें से कौन सा पॉइंट मैंने बताया जो क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया? Not a single point. All these issues we have discussed in our classes. So that's why I say that when you focus on the class, develop command on the class, and when you write in exam, the task will be easier, simpler. या तो आप सेल्फ स्टडी करो, खुद से पढ़ो, तो जो पढ़ रहे हो उसको कई बार पढ़ो, समझो और उसी को एग्जाम में लिखो. ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, सिंपल, क्लास में पढ़ना और आंसर डिस्कस करना. आंसर डिस्कस करने के बाद इंप्रूवमेंट महसूस हो रहा है कि अगर हमने ऐसे आंसर डिस्कस किया, एक एक आंसर डिस्कस किया, तो कितना बेनिफिट होगा? यही तो मैं समझा रहा था. जीएस मेंस के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा कुछ मॉडल क्वेश्चन मैं बना के अगर मैं डिस्कस कर लूं आपके साथ, तो आंसर राइटिंग विल बी इजियर और नॉट? व्हाट इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर आंसर राइटिंग? आंसर टेस्ट, मेंस टेस्ट सीरीज जरूरी है कि डिस्कशन जरूरी है? प्रिंटेड बुकलेट्स आर इंपॉर्टेंट और डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट. नाउ यू रियलाइज डिस्कशन इंपॉर्टेंट है. मेरी बात समझ गया ना? और रिजल्ट इसी से होगा, डिस्कशन से ही होगा. ठीक है? चलिए, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या है? ओके, दिस क्वेश्चन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दो द ग्रेट चोलास, देखो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है. दिस इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. So from this statement we need to find out the theme of the question. So first we read the statement that though the great Cholas are no more, yet their name is still remembered with great pride because of their highest achievement in the domain of art and architecture. Comment. So it's simply asking that you have to discuss about cultural contribution of Cholas. Okay, in which field? In the field of art and in the field of architecture. Very simple, यही तो डिस्कस करना है. ठीक है? Okay, their highest achievements, they are still remembered with great pride because of their highest achievements. They are still remembered. उनको उनकी अचीवमेंट्स के लिए याद किया जाता है. तो उनकी अचीवमेंट्स क्या है, यही तो बताएंगे भाई. मेरी बात समझ गया? इफ चोलाज आर रिमेंबर्ड फॉर देयर अचीवमेंट्स, तो बताओगे क्या? उनकी अचीवमेंट ही तो बताओगे. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, their achievement you will discuss, and achievement in the field of what? Art and architecture. So here what we see is that our main body again will be divided into how many parts? Two parts, part 1, part 2. यानी अब जब हम मॉडल टेस्ट बनाए या जो आंसर प्रैक्टिस करें, we have to relate at least 2 themes in one question. ये हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए. 3 themes in one question, how to write. ठीक है ना? Now first we'll write a simple introduction. We will also write what? A conclusion. Conclusion, introduction, conclusion. Okay, so let's write a simple introduction here. कि क्या introduction होगा? Okay, so write the intro part. Intro part. If you are familiar with the basic introduction of Cholas, you can write a very good introduction. ठीक है? थोड़ा सा बताना पड़ेगा because it's mentioning, the statement is focusing on the Cholas. So I have already discussed with you in the classes that Chola rulers, Chola dynasty in India
was not only the longest ruling dynasty in South India, it was not only the longest ruling dynasty in India, but it was also one of the longest ruling dynasty in the world. लेकिन वो कब होता है, जब हम थर्ड फोर्थ सेंचुरी, ठीक है, वहां से लेके मतलब संगम एज से कंटिन्यू करें, अशोका टाइम से कंटिन्यू करें, तब हो. बट हियर बेसिकली we have to discuss what about the imperial phase of Cholas. The question is dealing with what? Imperial phase of Cholas. And what is the imperial phase of Cholas? From 9th to 12th, 13th century AD. So if in an exam you will write about this, that this is the imperial phase of Cholas, okay, and Cholas are one of the most important political power in South India, ठीक है, और इनके एज में जो भी अचीवमेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ओके, बिगिनिंग ऑफ अ गोल्डन एरा इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर इन साउथ इंडिया. द क्वेश्चन इज डीलिंग विद दिस पार्ट ओनली, कल्चरल पार्ट ओनली. तो राइटिंग में क्या आना चाहिए, पॉलिटिकल पार्ट या कल्चरल पार्ट, क्या आना चाहिए, कल्चरल पार्ट, ओके. तो दिस इंपीरियल फेज ऑफ चोलास ये इंट्रोडक्शन में बताना जरूरी है, तो राइट दिस, द इंपीरियल फेज ऑफ चोलास, द इंपीरियल फेज ऑफ चोलास, okay, is counted, the imperial phase of Cholas is counted from 9th century AD to 12th 13th century AD, 9th century AD to 12th 13th century AD. The imperial phase of Cholas is counted from 9th century AD to 12th 13th century AD. And right, right, all the achievements, all the significant achievements, all the significant achievements of Cholas belong to this period, belong to this period. All the significant achievements of Cholas belong to this period. All the significant achievement of Cholas belong to this period. Okay. And right. Okay. Chola's cultural achievements marks, Chola's cultural achievements marked the beginning of, marked the beginning of a golden era. It marked the beginning of a golden era in South India. It marked the beginning of a golden era in South India. Golden era in South India. It marked a beginning of a golden era in South India. Now you have given a hint that yes, they have significant cultural contribution. Which phase these cultural contributions belong, and it is also known as beginning of. अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्वेश्चन में दो चीजें डील करनी है. पहला क्या है, आर्ट, एंड सेकंड इज व्हाट, आर्किटेक्चर. तो इन मेन बॉडी वी विल राइट वन एस्पेक्ट, वन डोमेन, दैट इज व्हाट, हाउ इट वाज गोल्डन पीरियड इन आर्ट. द सेकंड पार्ट, हाउ वी विल राइट हाउ इट वाज अ गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर. तो फिर से फोकस कर लिया गोल्डन पीरियड, ओके, सो दैट विल बी द more impressive. So write this main body. Now we are coming to the main body, main body, okay, and you will write here golden period, golden period in art, golden period in art. If you want to draw a rough sketch here, you can draw. ठीक है, कोई रफ स्केच आप ड्रॉ कर सकते हो. एक और बात है जो आप चाहो तो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो. यू कैन राइट वन मोर लाइन, यू कैन यूज इट. ठीक है, चाहो तो इंट्रोडक्शन चेंज भी कर लेना. That is very important. Write this line that, okay, Chola's period in India is also known as India's Renaissance of. Chola's period in South India, Chola's period in South India, ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है. Chola's period in South India is also known as the India's Renaissance in the field of. It is also known as India's Renaissance in the field of, in the field of sculpture, in the field of sculpture, architecture, literature, and different forms of art. Literature and different forms of art. This is also a kind of golden period. ठीक है, golden period. And if we are discussing art, तो आर्ट में एक हम क्या डिस्कस कर लेंगे, राइट दिस, स्कल्पचरल आर्ट.
I have already discussed this in detail in class. नटराज स्कल्पचर याद आया, चोला स्कल्पचर, नटराज स्कल्पचर, ये बता चुका हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताऊंगा यार. म्यूजिक एंड डांस, दिस कैन ऑल्सो बी रिलेटेड एज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आर्ट. म्यूजिक और डांस के बारे में भी बता सकते हैं. वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट पेंटिंग. पेंटिंग, आप ये बताओ, पेंटिंग एंड स्कल्पचरल आर्ट, यह बोथ विल बी व्हाट? टेम्पल आर्ट. यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा? टेम्पल आर्ट. And in South India, in Chola's period, the classical form of music and dance, which originated in the temples, ये भी एक तरह से चोला पीरियड में क्या है? This is also temple art. ये भी temple art. Different forms of art, music. We can relate one more thing, that is painting. Painting लिख लिया आपने? Okay, painting. Right, next. Okay, Tamil literature. We can also relate one more point here in art, that is Tamil literature. तो इतने एस्पेक्ट काफी हैं. इफ यू राइट दिस 4 एस्पेक्ट, दिस मच इज सफिशिएंट. और पार्ट 2 में पूरा का पूरा आर्किटेक्चर लिखना है. सो राइट दिस पॉइंट फर्स्ट, स्टार्टिंग विद दिस स्कल्पचरल आर्ट. स्कल्पचरल आर्ट में आओ एंड राइट सम पॉइंट्स हियर इन स्कल्पचरल आर्ट. Okay, sculptural art, we are going to elaborate this point, so write some points here, some indicative hints. We don't have to enter into detail. So write this: Chola bronze sculpture, Chola bronze sculpture, Chola bronze sculpture, Nataraj sculpture. The examiner will understand. You only have to give the indication or the hint. Full sentence में जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ. I am only discussing that answer which is practical. ठीक है. मैंने बहुत सारे ऐसे आंसर्स देखे जिसमें मॉडल आंसर में लोगों ने 400 वर्ड तक लिख दिया. कितना लिखना? 250 एंड 150. बट द पीपल आर गिविंग मॉडल आंसर इन 400 वर्ड्स. बच्चे कैसे लिख पाएंगे? ठीक है ना. तो प्रॉब्लम थोड़ा सा प्रिंट मोड में रहता है कि आपको अपना एक थोड़ा अरेंज वे में करना होता है. तो यू कैन नॉट डू लाइक दिस. यू कैन डू लाइक दिस इन एग्जामिनेशन हॉल और विथ मी. ठीक है. और कहीं स्कोप नहीं है. या तो क्लास में डिस्कशन के दौरान लिखो, क्लास नोट में लिखो, और वही चीज आप कहाँ यूज कर पाओगे? एग्जामिनेशन हॉल में कर पाओगे. तो वही तरीका है. राइट वन मोर पॉइंट हियर. ओके, okay, different poses. If you want to write here different poses, I have already discussed with you. Different poses. Okay, flexed poses, different poses, we all know this. Okay, you can write flexed pose, delicate ornamentation, pleasing faces, flexed pose, flexed pose, delicate ornamentation, delicate ornamentation, pleasing, pleasing. Okay, faces, pleasing faces. और क्लास में एक और बात मैंने बताई थी, आपको याद आया? लॉस्ट वैक्स टेक्निक. ये आईवीसी में भी देखने को मिलता है, यहाँ भी देखने को मिलता है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक. तो बताओ, स्कल्पचर्स विल बी हॉलो फ्रॉम विद इन और विल बी सॉलिड? यहाँ पे क्या होगा? सॉलिड. ठीक है. तो सॉलिड स्कल्पचर्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब भी लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज करोगे तो स्कल्पचर्स कैसी बनेगी? सॉलिड बनेगी. ओके, दैट इज स्कल्पचरल आर्ट. You can also write one more point here. Intricate stone carvings on the temple. ये भी तो sculptural part हो गया. Intricate stone carvings और relief sculptures. Relief sculptures on the wall of temples. ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था आपके पास. ये स्कल्पचर क्या होता है? 2D. ठीक है ना. इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग्स पिलर्स पे या ऑन द टेम्पल वॉल्स, बताया तो था क्लास में. दिस इज व्हाट 2D स्कल्पचर, रिलीफ स्कल्पचर. ओके, राइट. नंदी स्टैच्यूज, नंदी स्कल्पचर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. नंदी स्कल्पचर, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्कल्पचर. इलेबोरेट गोपुरम्स और गेटवेज, इलेबोरेट गोपुरम्स और द गेटवेज, गोपुरम्स और द गेटवेज. चाहो तो इसमें से एक दो पॉइंट आप छोड़ सकते हो. Okay, this much is sufficient. Okay, got it. Now we are coming to the second part, that is music and dance. Let's write a few points here in music and dance part. Okay, music and dance. So write this. Okay, classical forms of music and dance originated. Classical forms of music and dance
originated as temple art. ये बहुत बड़ी बात है. Classical forms of music and dance originated. Right? Am I audible now? Right. So classical forms of music and dance originated as a form of temple art. Right. One more point. Okay. Nat Mandir inside the campus of the temples. This also represents or indicates about dance. Nat Mandir. And write one more example. Nat Mandir. Nat Mandir. After this, write one more example. That is Natya Shastra written by Bharat Muni. That is a very important example here. Right. Natya Shastra that was written by Bharat Muni. Natya Shastra that was written by Bharat Muni. In culture, you will read about this Natya Shastra. Okay, this book you can say that is having all the important, relevant those informations. This can be regarded as the beginning of art, culture, theater, music. ठीक है. सबकी क्या टेक्निकलिटीज होती हैं, all these things have been discussed in this book. So that is one of the most important book. Now we are coming to the third part, that is painting. Right? The painting में कुछ aspects लिख सकते हो. You can write a few aspects in painting. Now what you are going to write in painting? Just write some points here in painting. Painting में लिखो mural paintings, mural paintings, wall paintings, paintings with realism, mural paintings, wall paintings, mural paintings, wall paintings. You can write this, that paintings with realism, mural paintings, wall paintings, paintings with realism. Okay, right. Paintings of Lord Shiva, paintings of Lord Shiva, paintings of Lord Shiva are most popular. Paintings of Lord Shiva are most popular. ठीक है. Lord Shiva are most popular. Got it? अब इसमें भी डिटेल चाहो तो लिख सकते हो. राइट वन मोर पॉइंट इन एग्जाम यू कैन लीव हियर. अभी आपकी डिटेल्स के लिए लिखवा दे रहा हूँ. So write this point. Paintings of Lord Shiva is more important. Write point one. Right. Shiva is shown as a warrior on the chariots. शिवा को योद्धा की तरह दिखाया गया है. Shiva is shown as a warrior on chariots. Shiva is shown as a warrior on chariots. Shiva is shown as a warrior on chariots. Okay, and right, this chariot is driven by, this chariot is driven by Brahma. This chariot is driven by Brahma. This chariot is driven by Brahma. Okay, that is one part. Okay. Now, गंधार, अप्सरा, बनियान ट्री एंड सम एनिमल्स, ये भी आ जाएगा. पेंटिंग में और क्या हो जाएगा? गंधार, गंधार, अप्सरा, गंधर्व, गंधर्व, अप्सरा, banyan tree, and some distinguished animals, plus other mythological themes from Hindu religion. इतना मैंने लिखा है, जरूरी नहीं कि सब लिखो, but just indicate 3 or 4 points, and your task will be done. Got it? Right? Now, we will deal one more point here, and that is Tamil literature. We are also going to discuss about this part, that is very important, Tamil literature. And here we cannot write in very much detail, so we will give some indications.
or the hint in this Tamil literature. So write point 1, Tamil literature, right? Okay. Growth and development of Tamil literature. Growth and development of Tamil literature during Cholas. Growth and development of Tamil literature during Cholas. Right. Okay. Right. The rulers like Rajaraj Chol and Rajendra Chol were great poets also. The rulers like Rajaraja Chol and Rajendra Chol, Rajendra Chol were the great poets also. ये लोग great poets भी थे. The rulers like Rajendra Chol and Rajaraja Chol were the great poets. ठीक है? The rulers patronized scholars. This much is sufficient. The rulers patronized scholars. The rulers patronized scholars. ठीक है? Are you asking something, Shatakshi? Is there any question? Yes, please ask. Yes, sir. So I wanted to ask, while writing this topic, is it specifically do the numbering Only marks are sufficient. Okay, there is no need to do them, just some marks or hints, right? Draw some sketch, do some marks or hint, and this will come with a lot of practice. And this method will be helpful in two things. First, you will be expert in objective facts. Just see, if you make a list that I am going to prepare literature in Pallavas, literature in Rashtrakoot, literature in Cholas, okay, literature in Vijayanagar, literature in Brahmani, okay. But the problem is that when you prepare, there is a lot of fact and information on the internet, hundreds of facts and information. So it becomes difficult for the student to filter the fact. Buddhist literature, Jain literature. So we can do this in the classes. We can make some sketches. Obviously the class will be boring. जब ये सारी चीजें करेंगे तो इसमें तो उतना मजा नहीं आएगा ना, ठीक है, जितना अशोका का दम पढ़ने में आएगा. बट अगर क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है तो हमें करना पड़ेगा. दिस इज अ सिंपल थिंग. ठीक है, तो ये बस प्रैक्टिस की बात है. मैंने कहा ना कि जो टॉपिक थोड़ा बोरिंग लगे या लगे कि यार इसमें तो याद नहीं हो रहा है, संगम पीरियड के वर्ड्स नहीं याद हो रहे हैं, क्वेश्चन वहीं से बनाएंगे यूपीएससी. उनको क्या करना है, कंपटीशन को, बहुत सारे बच्चों को एलिमिनेट करना है. कौन एलिमिनेट हो, बताओ. जो मौर्य पीरियड के बाद सीधा गुप्ता पीरियड पड़ेगा और एनसीईआरटी का चैप्टर नहीं पड़ेगा, क्राफ्ट ट्रेड एंड टाउन्स, कहानी खत्म. मैंने कहा था क्लास में, क्वेश्चन वहीं से आएगा. जो ट्रांजिशनल फेज है, at that part UPSC is focusing on, especially in the art and culture region. Okay, got it? This is what Tamil literature. So one part we have discussed, and this part is what? ये part हो गया आपका. Okay, क्या था ये? Art. Art we have discussed ना. Now we have to discuss about architecture. और जितने बच्चे भी क्लास में थे, आर्किटेक्चर तो मैंने बहुत डिटेल में कराया था. हालांकि मैं बता दे रहा हूँ, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द थीम हियर एंड यू विल बी एबल टू रिलेट. नाउ टेल मी इन क्लास, आई हैव यहाँ इसको आगे दूसरी स्लाइड में ले आते हैं. आर्किटेक्चर, आई एम गोइंग टू डिस्कस पार्ट 2. राइट दिस आर्किटेक्चर. एंड आर्किटेक्चर ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन द क्लासेस. आर्किटेक्चर, चोलाज आर्किटेक्चर. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यू विल ड्रॉ सम स्केच. फॉर एग्जाम्पल द्रविडियन आर्किटेक्चर, क्या क्लास में पढ़ा था? नागरा, द्रविड़ा एंड वेसरा. तो द्रविडियन आर्किटेक्चर, इट्स डेवलपमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग, याद आया कुछ? स्टार्टेड ड्यूरिंग पल्लवास, भूल गए आप लोग. एंड क्लाइमेक्स रीच ड्यूरिंग चोलास. क्लाइमेक्स रीच ड्यूरिंग चोलास, पढ़ा था इसको, ठीक है. वो टाइमलाइन भी हमने पढ़ा था क्लास में कि 4th to 9th सेंचुरी एडी. ये क्या है? पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर, जिनमें 5 स्टेजेस थे, क्लास में बताया था. तो यहाँ तो वो बताना नहीं है ना, बट वी हैव टू रिलेट, जिससे समझ में आ जाए. एंड चोलाज में क्या है? 9th to 12th 13th सेंचुरी एडी. यही इंपीरियल फेज ऑफ चोलाज है. दिस इज द टाइम पीरियड. एंड हियर वी सी व्हाट? क्लाइमेक्स. क्लाइमेक्स में क्या होगा? ऑल द फीचर्स विल बी इंक्लूसिव. ओके, तो द्रविडियन टेम्पल आर्ट के जो भी आप फीचर लिख जानते हो, you can write here. You are writing about temple architecture, so you write 2 things, features, and lastly you will write some example, important example. Now features, right? Feature क्या क्या feature है? अब एकदम जैसे क्लास में मैंने बताया था वैसे आप लिखते चलो. हाई बाउंड्री वॉल होगा कि नहीं? हाई बाउंड्री वॉल, yes or no? कैंपस बेस्ड टेम्पल्स, yes.
campus based temples, high boundary walls, raised platform, ये सब बताया क्लास में, राइट? हाई बाउंड्री वॉल, रेज्ड प्लेटफॉर्म, ओके, डोम शेप्ड कलश और शिखर, राइट? डोम शेप्ड कलश एंड शिखर, डोम शेप्ड कलश एंड शिखर, ये क्लास में पढ़ा चुका हूं, सो नॉट डिस्प्ले, ठीक है? हाँ, राइट दिस, लार्ज गोपुरम्स, लार्ज गोपुरम्स, ओके, इंट्रिकेट कार्विंग्स ऑन द गोपुरम्स, गोपुरम इसका सबसे एक इंपॉर्टेंट है ना हिस्सा होगा गोपुरम, और गोपुरम पे क्या होता है? स्कल्पचर्स ऑफ मिथुन, यक्ष एंड द्वारपाल, दरवाजे पे, ठीक है ना? तो स्कल्पचर्स ऑफ, राइट हियर, स्कल्पचर्स ऑफ यक्ष, मिथुन एंड द्वारपाल, sculptures of Yaksh, Mithun and Dwarpal. Got it? Garbhagriha, Sanctum Sanctorum. Yes, we can write this also. You all know about this. I have already discussed in class. Sanctum Sanctorum. This is known as Garbhagriha. बट यहाँ पे एक खास बात है कि गर्भगृह में भी सर्कुलर, में भी स्क्वायर शेप, दोनों हो सकता है. तो राइट हियर, मे बी सर्कुलर एंड मे बी स्क्वायर शेप्ड ऑल्सो, may be square shaped also. That is Garbhagriha. It may be circular, it may be square shaped also. Now tell me, there will be one mandap or many mandaps? बड़े टेम्पल्स में तो मंडप, असेंबली हॉल्स बहुत सारे होंगे, लाइक महामंडप, मंडप, अर्ध मंडप, ऐसा होगा ना? सो राइट दिस, ओके, मल्टीपल मंडप्स, मल्टीपल मंडप्स, ठीक है, लाइक महामंडप, मल्टीपल मंडप्स, like Mahamandap, right? Mandap, Ardh Mandap, multiple mandaps like Mahamandap, Mandap, Ardh Mandap, ये सब कुछ आ जाएगा इसमें. Got it? हाँ. अच्छा बताओ, वॉल पे इंस्क्रिप्शंस होंगे कि नहीं? यस. अच्छा बताओ, वॉल पे रिलीफ स्कल्पचर्स होंगे कि नहीं? यस. और भी बहुत कुछ हो सकता है, बट हमारे पास उतना लिखने का स्कोप नहीं है. देयर कैन बी अ लॉट ऑफ पॉइंट्स हियर, ठीक है? नाउ यू विल राइट व्हाट, वन और टू एग्जांपल, ठीक है? वन और टू एग्जांपल, और एग्जांपल सब इमेज दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में, ऐसा भी नहीं कि इसके लिए परेशान हो. ओके, वेरी गुड. राइट दिस, बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजौर एंड गंगईकोंड चोलपुरम एट तमिलनाडु. लिख दो तो, बृहदेश्वरा टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजौर, तंजौर एंड गंगईकोंड चोलपुरम टेम्पल, Gangai-Kond Cholapuram temple at Tamil Nadu. Brihadeshwara temple at Tanjore and Gangai-Kond Cholapuram temple at Tamil Nadu. ठीक है? इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, right? We can easily write this in 250 words. Now, what is the conclusion? Have you written all this? Conclusion. और देखो, ये कोई फिक्स नहीं है. अगर आपको लगता है that you can include some new points, remove some points, तो हो सकता है. मैंने कहा ना कि इन एग्जाम यू विल हैव टू परफॉर्म एवरेज टू बी टॉपर. तो इसमें अतरंगी सतरंगी वो ऐसा नहीं करना है कि पढ़ने लगो कि जो कोई नहीं लिख पाएगा वैसा आंसर मेरा होगा. वो काम कुछ बच्चे करते हैं, अपने आंसर को अलग बनाने के लिए अलग अलग किताबें पढ़ने लगते हैं, और कुछ टीचर भी ऐसा करते हैं, कहते हैं मेरे पास आओ, तुम्हारा आंसर दूसरों के आंसर से अलग होगा. भाई हमें अलग नहीं बनना, ठीक है? आईएएस बनना कोई अलग बनना थोड़ी ना हुआ. साइंटिस्ट बन जाओ, मार्क जुकरबर्ग बन जाओ, एलन मस्क बन जाओ, ठीक है, कलाम बन जाओ. आईएएस बने तो क्या बने, ठीक है, प्रधानमंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, ठीक है, फिर आईएएस हाथ बांधे खड़े रहेंगे. तो असली टैलेंट वहां है. मेरी बात समझे ना? चलिए, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कंक्लूजन. कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट चोला पीरियड, गॉट इट? एंड टेल मी, चोला पीरियड को किस घटना से हम रिलेट करें? तो चोला पीरियड की कल्चरल अचीवमेंट्स इतनी ग्रेट है कि गोल्डन पीरियड हम कह रहे हैं, इंडियन रेनेसा कह रहे हैं. सो कैन वी से दैट द चोला फेज developed a kind of cradle of culture, literature, okay, and it was successful in inspiring future generations. इसकी कहानी यहाँ पे लाके खत्म करनी पड़ेगी. इट वॉज सक्सेसफुल इन इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग फ्यूचर जनरेशन. ठीक है ना? जब कोई इवेंट बहुत ग्रेट हो तो उसको ऐसे लाके रिलेट कर दो. गॉट इट? ओके, सो राइट दिस पॉइंट, राइट दिस. ओके, द इंपीरियल फेज ऑफ चोलास
was successful. या लिख लो, Cholas were successful. Cholas were successful. Cholas were successful in developing a cradle of in developing successful in developing a cradle of culture, literature and civilization. A cradle of culture, literature and civilization. A cradle of culture, literature and civilization, which which is successful in inspiring and motivating our future generations. Which is successful, which is successful in inspiring and motivating, which is successful in inspiring and motivating our future generations. Which is successful in inspiring and motivating our future generations. Got it? Now we are coming to the next question. What is the next question? Okay, इसको कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज इससे तो हम एक एक करके करते रहेंगे, बट इसको अगर स्किप करेंगे तो फिर ठीक है छूट ही जाएगा. सो लेट्स फिनिश दिस. So what is the next question? How far is it correct to say that the First World War was fought essentially for maintaining the balance of power? Answer is 250 words. How many of you are taking world history classes? Have I discussed this? क्या discuss किया है? In order to write the answer of this question, you need to understand the development and the linkages that we have discussed in our classes. So what are the development and the linkages? First I will discuss with you. Obviously this question will also have what? An introduction, a main body and conclusion. So while writing these kind of questions, in the main body part you must draw a sketch, and that sketch will give the holistic understanding. But first we are going to write the intro part. What will be the intro? Okay, so it's talking about First World War, it's talking about balance of power. Got it? So what we will write in the introduction? So read this. uh, Outbreak of First World War, right? Outbreak of First World War was one of the most significant one of the most significant event in the history of world, in the history of world, right? It was one of the most significant event in the history of world due to its future consequences, due to its future consequences. Now examiner will understand that you recognize this event as one of the most important event. है कि नहीं? है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पेरिस पीस सेटलमेंट, उसमें प्रॉब्लम रही. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड विद दिस. क्लियर? सो आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट. यहाँ पे लिख देना 1914 to 1918. ओके, in the history of world and due to its future consequences. Now in main body, first we will draw a sketch and then we will enter into the main body. अगर बिना sketch draw किए enter कर गए तो फंस जाओ, right? So simply what you have to draw the sketch. That is the most important thing. So main body. तो देखो balance of power पे आपको बात करना है. So you write this balance of power. And now I am drawing a sketch. The events which I am going to correlate. Now I am writing here. Okay, FR फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789. ठीक है. इवेंट्स देयर आफ्टर, events thereafter. Examiner will understand that you are relating the event from 1789. Now I will write here Napoleon's era, 1804 to 1814 15. क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है? जिन लोगों ने क्लास किया वो रिलेट कर पा रहे होंगे. What I mean to say. Then you will write here Vienna Congress,
Vienna Congress. What is the year of this Vienna Congress? The answer is 1850. Clear? Then you will write what? R2 and R3. This is 1830 and you will write 1848. Here you can write one more point and that is Napoleon's era mein hi, right? That is 1806. 1806. 1806 में क्या है? देखो, Napoleonic military conquest were like what? Okay, the last nail in the coffin of Roman Empire. ठीक है, और रोमन एम्पायर की ताबूत में आखिरी कील था नेपोलियन का मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट. यू विल राइट हियर, राइट दिस 1806, राइट? Napoleonic military conquest, Napoleonic military conquest were like last nail in the coffin of, they were like last nail in the coffin of Roman Empire. They were the like the last nail in the coffin of Roman Empire. ये सारी events relate होंगी. अभी balance of past है. Then what will happen here? Okay, movements for unification of territories. Movement for unification of territories. And what will happen here? 1870-71. 1870-71. Unification of Italy and Germany. Unification of Italy and Germany. Then you will again draw a sketch here. And you will write here 1914, 18, and here write this. Okay, Germany as a powerful nation. Germany as a powerful nation. 1914 में है World War I. ठीक है? You can write one more point here. 1919, that is Paris Peace Settlement. Now these are some of the events which you are going to correlate in order to develop, okay, a sense or the picture of this balance of power. Okay, Jasprit, ask your question please. Okay, so you are going to correlate all these events. Yes, you are audible. Yes, your voice is echoing. Okay, so please write in chat box में लिखिए. ठीक है, थोड़ी सी echo हो रही है. ये बात आप समझ गया? Are you getting this point? Okay, now I am going to explain. I am going to narrate the story, and in the main body you will do what? You will write the indicative hints or points because you cannot narrate the entire story. पूरा लिख ही नहीं सकते. And this is the purpose that we are drawing the sketch, because this will convince someone of something. It will convince the evaluator that you are familiar with this entire development. This is the idea, and that's why we are writing. इसलिए हम लिख रहे हैं. Now we are just adding it. Okay, add करो. अब balance of power की story क्या है? Clear? So write this balance of empire. Write this powerful empires. Okay, absolute monarchs in Europe. Powerful empires and absolute monarchs in Europe. Okay, BOP, balance of power was centered here. It was centered here. BOP was centered here. And we are talking about, this is the period before 1804 to 1814-15. यहाँ पे है before, और फिर ये चीज रिपीट होके आएगी कब? आफ्टर 1815. बैलेंस ऑफ पावर कहाँ था? पावरफुल एम्पायर्स and powerful monarchies in Europe. Dynastic rulers, they were powerful. We all know that dynastic rulers. बता चुका हूँ, Hohenzollern dynasty, Bourbon dynasty, Savoy dynasty, Orange dynasty. So all these are the dynastic rulers. There was the concept of Roman Empire here. तो balance of power पूरा का पूरा यहाँ फोकस है, concentrated है. Okay, balance of power is concentrated.
Now what will happen? French Revolution and events thereafter. Okay, right? Point number 2. This is point number 1. In point number 2, read this: French Revolution and transitional development after this revolution. Transitional development after this revolution brought Napoleon. The detailed story we all know. French Revolution and the transitional development after this revolution brought Napoleon, and by his military conquests and by his military conquests and by his military conquests Napoleon by his military conquests Napoleon changed the entire political map of Europe. Napoleon changed the entire political map of Europe. Right, disintegration of Holy Roman Empire took place. Disintegration of Holy Roman Empire took place. Disintegration of Holy Roman Empire took place. Napoleon supported some ideas of revolution, and in this way, Napoleon supported some ideas of revolution, and in this way, Napoleon supported some ideas of revolution, and in this way, Napoleon emerged as one of the most powerful rulers in Europe. Napoleon emerged as one of the most powerful ruler in Europe. Now balance of power is centered where? अब कहाँ आ गया बताओ? We all know. Napoleon, France. So write this. Balance of power shifted in the favor of France. Napoleon. Here balance of power shifted in the favor of France or Napoleon. But will it be liked by the monarchical states? No. The conservative states? No. तो पहले किसके हाथ में था? Monarchical states and conservative powers. Now the balance of power shifted in the Napoleon's hand. France became the powerful. France became the powerful country. Right. Third point. But 1814, 15 ऐसे लिख दो सीधे. Okay. Defeat of Napoleon. At this defeat of Napoleon and Vienna Congress. Defeat of Napoleon and Vienna Congress. Defeat of Napoleon and Vienna Congress. Now again BOP shifted. Again BOP shifted. And here BOP shifted in the favor of which countries? Batao. Balance. Very good. Russia, Britain. But Britain was following a policy. Policy of what? A splendid isolation. Good. A splendid isolation. तो जब तक जरूरी ना हो ब्रिटेन इंटरफेयर नहीं करता है. That is the point. Britain was following the policy of a splendid isolation. So what we see here, that the balance of power again shifted, okay, in the favor of powerful monarchs and conservative forces. And this is a kind of regressive change. This is a kind of a regressive change. ये क्या है? Regressive changes. Now point number 3. Fourth point क्या है? Again देखो क्या होगा? Unification movements R2 and R3. You all know about this. I have already discussed in the classes. So you will give hint only. Exam में केवल hint लिखा जाता है. Examiner इतना समझदार होता है, बार बार बता रहा है. सब बात नहीं समझानी उसको, right? Unification movement R2 and R3. What will happen? Italy and Germany. The rise of Italy and Germany as a new nation on the political map of Europe. And who is in more powerful position here? Italy and Germany. Tell me, कौन ज्यादा powerful position में? Germany. Because Germany की वजह से तो इटली का यूनिफिकेशन पूरा हो पाता है. तो Germany is in a more powerful position. Germany is in a more powerful position. Very simple. Germany is in the more powerful position. ठीक है? All will complete with the efforts of Germany. Germany ज्यादा powerful position है. और जर्मनी ने किसको डिफीट करके यूनिफिकेशन कंप्लीट किया है? व्हाट इज द आंसर? फ्रांस. सबसे मजेदार बात तो ये है. सो जर्मनी इज मोर पावरफुल पोजीशन एंड एट दिस फ्रांस वाज डिफीटेड.
फ्रांस वॉज डिफीटेड। ये एक तरह से क्या है, ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन ये एक तरह से क्या है, ओके, अ काइंड ऑफ इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट टू नेशनलिस्ट फीलिंग्स, insult to nationalist feelings. Germany has emerged powerful. It means again BOP shifted. BOP फिर से shift हो गया. And now BOP shifted in the favor of Germany. What we see here, that BOP shifted in the favor of Germany. And who was maintaining diplomatic relations of Germany? The answer is Bismarck. So under this leadership of Bismarck, Germany now is one of the most powerful country in Europe. फिर से जर्मनी क्या हो गया, most powerful country. A newly formed nation became the most powerful country. ठीक है, तो बिस्मार्क के टाइम तक तो सब ठीक है. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू 20 इयर्स टिल 1890 सब कुछ ठीक है. बट आफ्टर बिस्मार्क व्हाट विल हैपन, जर्मनी विल आल्सो स्टार्ट मेकिंग कॉलोनियल क्लेम्स, मेकिंग इट्स नेवी पावरफुल. तो ये क्या हो गया, claims. This is the phase of new imperialism, बताया था आपको 1870 to 1914. तो new colonial claims, imperial claims, social Darwinism concept was validated by the powerful nations of Europe. Possessing colonies was considered as a matter of respect and pride. So they will come in conflict with each other. ठीक है. And what is happening? Ottoman Empire is also disintegrating. The question of Balkan states came in conflict with each other. क्यों लड़ रहे हैं? Because of the idea of social Darwinism. Possessing colonies was considered as a matter of respect and pride. They came in conflict with each other, and what started? First World War started. ठीक है ना? So when Bismarck was there, when he was maintaining the diplomacy of Germany, so he managed the things in such a manner that the peace was maintained for nearly 20 years in Europe. But after Bismarck, Kaiser William II will make some mistakes, and the result we see. The result is in the form of what? Okay, First World War. This is the entire story. So we cannot narrate everything. So we will write the hints here. So write next point, fifth point. Fifth point is what? Fifth point is right 1870 to 1914. 18. This phase. This is what? New imperialism. New imperialism. What we see here? Colonial rivalry. Only write the keywords. Don't write the full sentences. Okay. Validation of social Darwinism. Validation of social Darwinism. New imperialistic claims. New imperialistic claims over, okay, disintegrate uh, due to disintegration of Ottoman Empire, Balkan states, colonial rivalry plus commercial rivalry, everything. Okay, all this is done for what purpose? The reason is what? Balance of power. Who is powerful? Now this is the question. Who is powerful in Europe? Because the people are validating what? Social Darwinism. And what is happening? Aggressive nationalism. Aggressive nationalism. And to maintain this balance of power, what happened? Secret alliances, groups were formed. Okay, grouping of nations and states were formed. Grouping of nations and states were formed. This all was happening. And what England was doing? England was busy in promoting its economic interests, maintaining control over the colonies. England यहाँ busy और यहाँ balance of power के लिए conflict हो रहा है. This all is what? Balance of power. Okay. Now, Germany is trying to assert its position, supported by which country? Italy. Right? Supported by which country? Austria. Now, what we see? France wants to take its revenge, but due to Bismarck policy, it was completely isolated. Finally, it will get a friend. That friend is Russia. And finally, they will be supported by which country? Britain. Clear? And finally, this group is supported by which country? US. And finally, Italy will do what? Italy will change side. Italy will join this side.
So what we see, why all this is to maintain balance of power in Europe. जर्मनी इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि उसने चैलेंज किया. So this all is why, to maintain balance of power in Europe. Read this. Okay, grouping of nations. Okay, two group of nations came in conflict with each other, and that is First World War. And the basic purpose is what? To maintain balance of power. This was the basic purpose, to maintain balance of power. Now we have answered this question, that the conflict that we see, the war that we see in the form of First World War, the seeds were laid in Vienna Convention itself, because Vienna Convention introduced what? A regressive order. Got it? It tried to suppress what? Progressive, okay, ideas. Okay, got it? So this is the entire idea. In the main body, you will write these things. And I think that by this, you will be able to convince the examiner that, yes, I understand that what was the case of, okay, balance of power. This all is what? Fought for the balance of power. Now the most important challenge is the conclusion of this answer. So in conclusion, what you will do? You are talking about balance of power. Conclusion, you will write that this Paris peace settlement was held or organized in 1919. And write this: the provisions of Paris peace settlement were not just and fair. They were not just and fair. And according to some according to some critics, okay, the seeds of Second World War, the seeds of Second World War lies in the provisions of Paris Peace Treaty. You will write here, okay. And now the examiner will get the understanding that you are familiar with the core theme. पता है कि यहाँ पे क्या होगा? फ्रांस बदला लेने की कोशिश करेगा. ये ऑलरेडी डिस्कस विद यू. Okay, US Woodrow Wilson will say that no, just होना चाहिए. Okay, we should not try to take a revenge. Peace and neutrality को ध्यान में रखो. But his opinion was ignored. Clear? ब्रिटेन क्या करना चाहता है? इकोनॉमिकली वीक करना चाहता है जर्मनी को. फ्रांस क्या कहता करना चाहता? वो इंसल्ट का बदला लेना चाहता है. And now Treaty of Versailles, which was signed with Germany, very harsh restrictions were imposed on Germany. According to the war guilt clause, Germany was held, okay, the sole responsible nation for the outbreak of this First World War. So this all we see here. मेरी बात समझ? But we cannot write everything ना. क्या हम लिख सकते हैं? Tell me. No. ये क्वेश्चन पे तो पूरा का पूरा 2000 वर्ड्स लिख सकते हैं. And here you have to write in how many words? ठीक है. तो ऐसा नहीं सोचना है कि इन आंसर मैंने जस्टिफाई नहीं किया. You have to write in 250 words. So this is an essay. You can write as much as you can. So here what you have to do, you have to convince someone of something. And when you draw this sketch, when you write some of the important ideas, when you write the grouping of states, वो structure draw कर देते हो कि first world war में BFRGI, the trick that I discussed with you, that there was a girl named GI having boyfriend Russia. I changed the side, later supported by US. When you draw the structure, examiner will get an idea that the student has a very clear understanding about what was happening in the world at that time. And our classes are designed in such a manner. क्या मैंने क्लास में जो पढ़ाया उससे एक लाइन भी अलग बताया क्या इस आंसर में? नहीं. And that we need to practice. So once we finish our classes, where should we focus? We should focus on the discussion of questions and their answer. ठीक है. और वो डिस्कशन घूंघट की आड़ में नहीं करना है, वीडियो ऑन करके करना है. ये भी ध्यान रखना है अगली बार से. When I will discuss essay, when I will discuss mains answer question, all of you will have to keep your videos on. ये छूट केवल और केवल क्लासेस तक है. In discussions, all of you will keep your videos on. Okay, you will ask your doubts, we will discuss, and then we will get the benefit of the classes. मेरी बात समझ गया ना? क्लास में तो हम एक स्टैटिक वे में पढ़ाते चले जाते हैं, बट जब हम डिस्कस करते हैं तो द पॉइंट्स विल स्ट्राइक इन योर माइंड. आप पहले से पढ़े रहोगे तो कुछ आइडियाज दोगे, कुछ सजेस्ट करोगे. व्हेन आई विल आस्क यू दैट व्हाट विल बी द इंट्रोडक्शन, देन यू विल ट्राई टू स्पीक, और तभी आप आंसर लिख पाओगे. दिस इज द ओनली क्राइटेरिया. दिस इज डिफिकल्ट पार्ट, दैट्स व्हाई टीचर्स डोंट सजेस्ट. ठीक है, कि इतनी सरदर्दी कौन ले.
Okay, right? But I know that these things will work. Okay, we'll be able to bring results. Chalte. Now we are going to, इतना ही था क्या कि there was, हाँ, there was one more question. I think एक और question था. Let's discuss that. Yes, this was the last one ना. How far was the ये तो मैंने अभी YouTube वीडियो में पोस्ट किया था एक हाउ EIC एक्सप्लॉइटेड इंडिया, तो उसमें तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट ही डिस्कस किया हूँ. आज सुबह मैंने स्टेटस में भी डाला था. तो आई एम डिस्कसिंग इट इन वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज मैनर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माय YouTube वीडियो, तो उसको देख लेना आप लोग. तो देखो, व्हाट इज द क्वेश्चन. अगेन दिस क्वेश्चन विल हैव थ्री पार्ट्स: इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन. यहाँ मैं बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, इट इज ऑलरेडी इन माय यूट्यूब वीडियोस. ठीक है, तो उसको देखिए. हाउ फॉर वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और ये एग्जाम से कितने दिन पहले शेयर किया था मैंने, आई होप 2 और 3 days बिफोर द एग्जाम. तो मेरे तो वीडियोस अगर आप 2-3 वीडियोस भी देख के गए होते तो 15 मार्क्स यहाँ रखा हुआ था. ठीक है ना. प्रिंसली स्टेट मैंने शेयर किया, तुम देखते रहो, एग्जाम में आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा. Remaining 2 videos are also there that I will post. Okay. How far was the industrial revolution in England responsible for the decline of handicraft and cottage industry in India? So first we have to write in England. Sorry, introduction. So write introduction. A very simple introduction. Write this. Okay. Establishment of British rule in India. Establishment of British rule in India and industrial revolution in Britain. Both were both were simultaneous. Both were simultaneous. बता दिया हमने. ठीक है. Establishment of British rule in India and industrial revolution in Britain both were simultaneous. Clear? Now it shows that there must be a correlation. It shows that there must be a correlation between these two processes. It shows that there must be a correlation between these two processes. क्या ये इंट्रोडक्शन क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस कर रहा है? यस. नाउ देखो, वी नो दैट दिस पर्सपेक्टिव इज द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, बट वी डोंट नीड टू राइट दैट इन एग्जाम. वो मैंने आपको समझाया था. ठीक है ना. एग्जाम में एग्जामिनर को पता नहीं लगना चाहिए कि ऑप्शनल वगैरह है, इसका एकदम सिंपल वे में लिखो. ठीक है ना. कुछ लोग क्या करेंगे, कहेंगे अरे मेरा तो हिस्ट्री ऑप्शनल है, अभी मैं बताता हूँ हिस्ट्री ऑप्शनल वाला नॉलेज देता हूँ. एग्जाम में कहे अच्छा बेटा पढ़ के लग गया कि हिस्ट्री ऑप्शनल है आपका. जनरलाइज्ड वे में आपको लिखना है. नाउ व्हाट विल बी द जनरलाइज्ड वे. तो इन मेन बॉडी फर्स्ट यू विल ड्रॉ अ स्ट्रक्चर एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ड्रॉ अ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या है? I have already drawn this structure. Okay, and this is the structure. 1760s. 1760s. You will write Industrial Revolution in Britain. Right. It was textile revolution in its initial phases. It was textile revolution in its initial phases. हो गया? In part 2, what we are going to write here? Okay, Bengal. Write this. I have already discussed this with you. Most prosperous province of India. ठीक है? Exactly. 1/3 of exports from Asia from Bengal alone. And third, right, textile export was the most popular export. Textile export was the most popular export. And then European markets. Exactly. European markets were flooded with Indian textiles. European markets were flooded with Indian textiles. Got it? European markets were flooded with Indian textiles. Now what will happen? Read this. Political control over Bengal. Political control over Bengal. And you are writing the points here. जरूरी नहीं कि हर चीज सेंटेंस में लिखें. This is addressing the need of your exam. And you will write here 1757, 1764, right?
This is what? Battle of Palasi. This is Battle of Buxar, 1765. This is what? Treaty of Allahabad. ठीक है? And this is what we can write here as a single point, that is 60s. This is also what? 60s. And what do we see here? That both are simultaneous. Both are simultaneous. दोनों क्या है? Simultaneous. Got it? Then you will correlate one more point. 1765 से EIC got what? Diwani rights. And Diwani right is what? The right to collect land revenue. This is the Diwani right now. The right to collect land revenue. This is the Diwani right. 1765. This is the Diwani right. The right to collect land revenue. अब यहाँ पे आपको मेन बात बताना है, वो क्या है? बताओ, कुछ गेस कर पा रहे हो? Investment. Purchases were made. Now the British will do what? Industrial revolution हो गया. The production will be done with the factory system of production. They will do what? They will purchase raw materials with the revenues that is collected from India. And these purchases they are naming what? Investment. In this way they are getting what? Raw materials free of cost. So this will make your product, make the British products more cheaper. रॉ मटेरियल फ्री मिल गया और आप प्रोडक्शन मशीन से कर रहे हो. मशीन से तो प्रोडक्शन और सस्ता होगा, ज्यादा होगा, प्लस रॉ मटेरियल चीपर है. तो इससे क्या आप इंडियन टेक्सटाइल को यूरोपियन मार्केट से आउट नहीं कर दोगे? यस, इंडियन टेक्सटाइल को इंडियन मार्केट से ही आउट कर सकते हो आप, बिकॉज यू आर ऑल्सो प्रेजेंट एज अ ट्रेडर इन द इंडियन मार्केट. तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि हाउ टेक्सटाइल डिक्लाइन. मेरी बात समझ गया ना? दिस कॉन्सेप्ट. सो राइट हियर दैट ओके, British started at this company officials started purchasing raw materials from India, from the revenues that were collected from India, from the revenues that were collected from India. They started purchasing raw materials from India from the revenues that were collected from India. इंडियन से जो रेवेन्यू आ रहा है उसी से कलेक्ट करने लगे. राइट दिस. नाउ रॉ मेट इस ब्रैकेट में लिख लेना इन्वेस्टमेंट. दिस वाज कॉल्ड व्हाट? इन्वेस्टमेंट. This was called investment. Now you will write what? Raw materials are free of cost, plus textiles manufactured in factories in Britain. Raw materials are free of cost, and now textiles are manufactured free in Britain. एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, डोंट राइट फुल सेंटेंस. ठीक है, आपको शशि थरूर से भी अच्छी इंग्लिश आती हो फिर भी मत लिखना. राइट? रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चर्ड, ओके, सॉरी, रॉ मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट, textiles manufactured in factories. So write this, will be more cheaper in this way. Will be more cheaper in this way. Cheaper textiles. तो इससे क्या होगा? Indian textile will be out from European market and Indian market also. So write this, as a result, Indian textile was out from European market as well as Indian market. Now Indian textile was out from the European market as well as Indian market. अब इंडियन टेक्सटाइल बाहर हो गया, यूरोपियन मार्केट से भी और इंडियन मार्केट से भी. इससे क्या होगा? नाउ लुक एट द क्वेश्चन. Now what will happen? We are coming to the question. Decline of handicraft. Can we say textile handicraft? Yes or not? Is it a part of cottage industry? Charkha? Yes or not? Yes. So decline हुआ? Yes. Clear? Write this. In this way we see that decline of textile handicraft, okay, and cottage industry in India was ensured. In this way we see that decline of, okay, textile handicraft and cottage industries, okay, was ensured. ठीक है. अंग्रेजों ने चरखा और करगा को तोड़ दिया. What does it mean? Decline of cottage industries, decline of textile handicraft. Right? One more point. Right? In this context,
context, Karl Marx writes that, in this context, Karl Marx writes that, Karl Marx writes that India was bleeding, India was bleeding, and industrial revolution in Britain was becoming successful or flourishing. Read this. India was bleeding. Karl Marx read this. What Karl Marx write? That India was bleeding and industrial revolution in Britain was flourishing. It was blooming. Okay, it was flourishing. India was bleeding. Plus क्या इसमें हम एक फैक्टर और डाल सकते हैं? Promotion of westernization, subordination of Indian culture under British culture. The ultimate objective was to make Indians good consumer of the British products. This was also done. Yes, this was also done. And this was done for what? To fulfill the increasing needs of British industries. ये कब होता है? 1813 में. उस समय तक क्या हो चुका है? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन हो चुका है. So read this. 1813 onwards, right? One more point. 1830s, 1813 onwards, right? Efforts were made to promote 1813 onwards efforts. शताक्षी अनफेयर टैरिफ से ये भी होगा. अनफेयर टैरिफ भी लिख लो, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ उसमें ऐड कर लो, राइट? 1813 onwards, right? Efforts were made to promote westernization. Efforts were made to promote westernization. ठीक है, इसके लिए एफर्ट शुरू. Efforts were made to promote westernization. यहाँ पे रीजन क्या है? अच्छा देखो, एक और चीज, हाँ यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन, राइट? Purpose was, right? This purpose was to subordinate Indian culture under Western culture, to subordinate Indian culture under Western culture. This was the purpose, to subordinate Indian culture under Western culture. यही purpose था ना, to subordinate Indian culture under Western culture. And why? So that, read this, so that Indians could be made good consumer of British goods. British goods. तो इसका भी रिजल्ट क्या हो गया? What will be the result? रिजल्ट क्या हो गया? Decline of, right, handicraft. Result will be what? Decline of handicraft and cottage industry. हो जाएगा. जब मार्केट से डिमांड ही खत्म कर दोगे, so obviously the result will be what? Decline of handicraft and cottage industries. Right, one more point. Read this. 1850s. Development of physical infrastructure in India was also motivated to ensure fuller exploitation of Indian resources. Clear? 1850s onwards, development of physical infrastructure in India was also motivated to ensure fuller exploitation of Indian, okay, resources, Indian resources. यानी कि ये भी इसीलिए हुआ. तो रिजल्ट क्या होगा? डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट. ओके, अच्छा इसको फिर से रिलेट करो. क्या ये ऐसा हुआ कि ब्रिटेन की जो ग्रोइंग इंडस्ट्रियल नीड्स है उसको फुलफिल किया जा सके? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर रेलवेज बनेगा तो you can get raw materials from the remote interiors. Okay, so you can write one more point here, that this was also done to fulfill growing needs of British industries. This was also done to fulfill growing needs of British industries. So basically we have explored how many areas? 3 areas. First, second and third, 3 perspectives. Development of physical infrastructure in India. Okay, it was motivated to ensure the fuller exploitation of Indian resources, and it was also done to fulfill the growing needs of British industries. Result क्या होगा? Decline of handicraft and cottage industry. Okay, result will be the decline of handicraft and cottage industry. You can explore one more area here.
you can explore one more area, and that is what? Official discrimination. Official discrimination. And what is the official discrimination? The government should do what? Government को क्या करना चाहिए? British Indian government should provide help and support, should encourage Indian handicraft and cottage industries. The government did what? Used unfair tariff means, discriminatory trade practices. Clear? So this also was a reason for the decline, and all this was done for what purpose? To fulfill the growing needs of British industry. इसीलिए तो किया गया. So official discrimination. British government read this encouraging, instead of encouraging or giving financial support and help, instead of encouraging and giving financial support and help, right? Instead of encouraging or giving financial support and help, the government was doing what? Right? Okay. The government was doing official discrimination. Okay. Using unfair tariff policy. Unfair tariff policy. Okay. Okay. And this all was done for what? Right? It was done to support. It was done to support British industrialization. British industrialization. This was also done to support British industrialization. Did British set up heavy industries in India? No. They were industrialized. Did they brought machines in India? No. So why? Because they want to promote British industrialization at the cost of Indian resources. And this is the meaning of colony also. This is the fate of the colony also. That your economy, your political system, your education system, your cultural system, each and everything will be subjugated to fulfill the needs of the parent country. यही तो होता है ना. Now you will write conclusion. You will write conclusion. Conclusion. ठीक है? And now the conclusion. What is the conclusion here? Okay. Right. Okay. Right. The transformed nature of Indian economy. हाँ ठीक है. Vipin. Good. Read this. Okay. Read this. The result of economic policies of British in India was to ensure the objective of economic policies of British in India was to ensure complete subordination of Indian economy under British economy. Complete subordination of Indian economy and Indian economy under British economy, right? And handicraft and cottage industries were not an exception for it. And handicraft and cottage industries were not an exception for this. They were not an exception for this. They were not an exception for this. Clear? So all the questions are now finished. Total number of questions were 6. Total 6 questions we have discussed. And this is not only the discussion of these 6 questions. Today, I want to just make you understand that when I was saying that I am going to start a session where we will discuss the question answer. So the basic purpose is this. After this, how many 3 hours हो गया ना? It's a 3 hour session. After this 3 hour session, do you think that कुछ growth हुआ? कुछ सोचा आपने दिमाग में? Okay, that ठीक है? कुछ enlightenment हुआ? So this is the purpose of the class. That if you give 2 hour, 3 hour, so it should be fruitful. Now this entire discussion is fruitful. Now you are familiar with the 6 important themes in the question. Now what you will do for 2025 prelims? Okay, Chola topic and Pallava topic. Vedic culture. Got it? These 3 topics from art and culture. Now this is your project. Start preparing facts from these topics. ठीक है ना? उनको collect करना शुरू करो. Okay. And when I will discuss art and culture, so all these things will again be repeated. देखो पहले मैं पढ़ाऊंगा art and culture. ठीक है? So those who have already taken the classes, they may also join because here I am going to innovate a lot of things. Okay, on a new format I will teach. Completely new format it will be, right?
So you can join the classes and that will be helpful for your plans. Plus I will design answer discussion sessions and I will send you information कि कब वो सेशन ऑर्गेनाइज होंगे, ठीक है, बिकॉज क्लासेस के बाद जो थोड़ा बहुत भी टाइम बचेगा, सो आई विल डू दिस, ठीक है ना. आंसर राइटिंग सेशन, एसे राइटिंग सेशन, एक मॉड्यूल आर्ट एंड कल्चर हम लेके आएंगे, ठीक है, तुरंत. मॉडर्न या वर्ल्ड जो भी पहले खत्म होगा तो पैरेलली वी विल स्टार्ट आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना. और जब दूसरा मॉड्यूल खत्म होगा तो उसके पैरेलल वी विल स्टार्ट इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस बोथ टुगेदर, ठीक है ना. तो ऐसे कुछ मैनेज करके चलेंगे, ठीक है ना. गॉट इट. हैव यू एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? आंसर मिल गया? यस, आस्क योर क्वेश्चन. नो नो, फर्स्ट वी विल डू आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर नॉट एमसी, ठीक है ना. हाँ, एएमसी का एक सेपरेट मॉड्यूल होगा जिसमें चूंकि मेडिवल भी आएगा और बहुत फाउंडेशनल स्टडीज होगा. आर्ट एंड कल्चर में आई विल डिस्कस द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल पल्लवास लिटरेचर आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग. तो हमें बेसिक आपको नहीं बता पाऊंगा कि पल्लवा का मतलब क्रीपर होता है, पल्लवास आए कैसे, पल्लवा रूलर कौन था, वो नहीं डिस्कस कर पाऊंगा. आई विल डिस्कस डायरेक्टली द कोर इश्यूज, हिट द कोर इश्यूज. बट वंस आई विल डिस्कस एएमसी, आई विल डिस्कस बेसिक दैट हु आर पल्लवास, पल्लवास आए कहाँ से, पल्लवास और चालुक्यास का कॉन्फ्लिक्ट कैसा है, ठीक है. तो अभी जो हम एक मतलब पैरेलल जाएगा दोनों मॉड्यूल. तो आर्ट एंड कल्चर में वी विल डिस्कस आर्ट एंड कल्चर, दिस इज नॉट एएमसी, दिस इज ए एंड सी, ठीक है. गॉट इट. एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. आज 3 आवर्स का सेशन हो गया, टारगेट था 2 आवर्स तो मैं तो टाइम लिमिट एक्सीड ही कर जाता हूँ. शॉर्ट वीडियोस मुझसे बन नहीं पाते. एक्चुअली यूट्यूब पे मैंने वीडियोस डाले 14 और 15 वीडियोस, है ना, एंड इट हैज क्रॉस्ड 800 आवर्स. मेरे सब्सक्राइबर से ज्यादा तो वॉच ओवर जा रहा है उसका. तो पहले मुझे लगता था यार, लोगों ने कहा यार ये वीडियोस तो आप इतना लंबा वीडियोस डाल रहे हो, देखेगा कौन, है ना. इट्स क्रॉसिंग 800 आवर्स, 800 आवर्स वॉच टाइम क्रॉस कर गया, ठीक है. और ये बड़ी बात है. इट मीन्स द पीपल आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दोज वीडियोज वेयर दे कैन गेट गुड कंटेंट, बट दैट इज नॉट अवेलेबल. मैं तो एक बात समझ पाया हूँ कि स्टूडेंट देखना चाहते हैं वीडियो जहाँ पे कि कंटेंट हो, जहाँ उनको कुछ मिल जाए, बट ऐसा मिलता ही नहीं है. तो लास्ट में वो क्या करते हैं, शॉर्ट वीडियोज की तरफ जाते हैं. तो मुझे लग रहा है कि मेरा एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा ठीक जाने वाला है, लॉन्ग वीडियोज वाला, ठीक है ना. ओके, चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. वेलकम. यस प्लीज आस्क. हाँ, कोई क्वेश्चन था जसप्रीत का, यस आस्क योर क्वेश्चन. वो मैं चैट बॉक्स में देख नहीं पाया. प्लीज आस्क. हाँ, पूछिए, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? हाँ, शताक्षी आस्क योर क्वेश्चन. एससे की वीडियो वो मतलब उसमें कई बार वॉइस डिस्टर्ब है और थोड़ा बहुत उस पर काम हो रहा है, तो होपफुली कल तक हो जानी चाहिए. होपफुली टुमारो यू विल गेट इट ऑन यूट्यूब. इसको भी मैं अपलोड करवा दूंगा, आई विल गेट दिस वीडियो अपलोडेड आल्सो, ठीक है ना. बट आप लोग लाइव क्लास में आना बंद मत करो, लाइव इंटरेक्टिव क्लास में, ठीक है. यू आर फ्री टू आस्क योर डाउट. ये मतलब नहीं कि अपलोड हो जाएगा तो देख लेना. मेरी हर एक क्लास, अगर मेरे साथ 1 आवर अगर आप टाइम दे रहे हो तो दैट विल बी फ्रूटफुल, हमेशा याद रखना, ठीक है ना. सीधा एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा और आप रियलाइज कर भी रहे होगे, राइट. चलिए, ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू. Yes, yes, Jaspreet, please ask. You are audible, Jaspreet. This question, World War related question or modern India Industrial Revolution related thing? Which one? I think that your voice is echoing or what? The voice is not very clearly audible. ठीक है, कुछ इको हो रहा है. आप एक बार आप चैट में कुछ हिंट लिखो, आप क्या कहना चाह रहे हो, कौन से क्वेश्चन में है, तो मैं बताता हूँ दोबारा. क्वेश्चन नंबर है. अच्छा अच्छा, ओके ओके, 1 सेकेंड. दिस वन, हैव यू स्टडीड वर्ल्ड हिस्ट्री? मुझसे वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ा है, पहले ये बताओ जस्ट. नहीं, मेरी क्लास देखो. हाँ, मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में क्या होता है ना कि एक कनेक्टिविटी है. सो इफ यू विल मिस वन क्लास आल्सो तो इंटायर कनेक्टिविटी विल बी ब्रोकन, ठीक है. सो दिस टॉपिक इज वेल कनेक्टेड, ठीक है. तो इसके लिए जरूरी है कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री की वीडियोस को देखो, राइट, बिकॉज हियर
यूट्यूब पे L1 to L5 शायद 5 लेक्चर्स होंगे, बट नॉट ऑल, ओके, बट आई थिंक दैट इन सम टाइम इट विल बी अवेलेबल देयर ऑन यूट्यूब ऑल्सो, ठीक है। वो थोड़ा एडिटिंग वगैरह वाली बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, तो एडिटिंग के बाद मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो उसको डिटेल में आप एक बार जो वर्ल्ड हिस्ट्री की मॉड्यूल्स की जितनी वीडियोस हैं ना, उसको आप देखिए, तो वो आपके आईआर में भी हेल्पफुल होगा, इंटरनल सिक्योरिटी कई जगह पे हेल्पफुल होगा। सो वॉच द इंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री वीडियोस, ठीक है ना। यहाँ पे तो मैंने केवल रेफरेंसेस लेके आंसर डिस्कस कर लिया। गॉट इट जसप्रीत? ठीक है। तो एक बार आप वीडियोस देखेंगी तो आपको पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी। जो मैंने क्लास में पढ़ाया है एग्जैक्टली उसी मॉडल पे मैंने आंसर डिस्कस किए, ठीक है। जो थीम मैंने क्लास में पढ़ाया है, जो क्लास में कंटेंट पढ़ाया है, इट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डिस्कस्ड हियर, इट्स नथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट। गॉट इट जसप्रीत? ठीक है। तो अभी जो रिमेनिंग क्लासेस है उनको तो आप देख लो वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है ना, बिकॉज विल स्टार्ट फ्रॉम अमेरिकन रिवॉल्यूशन फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। तो उसको आप अटेंड करते जाओ, जो छूट गया उसको छोड़ के अभी जो मिलेगा उसको पढ़े, ठीक है ना। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, थैंक्स फॉर